in chilly Seoul, South Korea, but things are starting to heat up. Welcome to Valorant Champions Tour Pacific Kickoff. I'm your host, Chubby Ninja, and with me I got a new analyst with us, Mabuhay Asarai. Yay. Welcome. How Hi, are you hi, hi. feeling? I'm good. Super excited and just happy to be here. We are very happy to have you here too. And Achilles, we had a long day yesterday. What are you talking about? It was a short day. Today's the first day. What is it? Yesterday, it didn't. There was just a rehearsal. Now it's time to get into the action. But yeah, I mean, it was long, but also action-packed. When we were in the game, things were really tight in both of those matches. So honestly, it was a very fun experience, all things considered. Right? It was actually incredible. The two matches that played off yesterday was T1 and Bleed, with T1 taking it to the next one with the win. It was a really close game, and Gen G versus RRQ, and that was another back and forth the entire time. They took it to the third map on Sunset with Gen G winning that one out. Now we got to talk about today's matches. We were hoping to see that yesterday, but now we're going to see it today. We're going to see Zeta Division versus Generation Gaming. Gen G, we were highly anticipated. Sorry, not Gen G. Global. Global Esports. I am kind of in yesterday. Global Yesterday Esports. messed with us. It did, yeah. So Global Esports and Zeta Division. So these are two teams we're also really excited to see, right? Yeah, I mean, for sure. I mean, Zeta, we've got a taste of both of these teams in the offseason. We got to see Zeta Division twice, once at Red Bull Homeground, then at the Riot 1 event in Japan. And then Global, we got to see with this kind of new roster coming together over at Convergence. Because obviously there's only one mainstay from this team. Everything else has basically been rebuilt. And even the mainstay is not somebody that we got to see too much of. Obviously, lower third, not quite correct. That's PhonePe from Global Esports. Yeah, let's talk a bit about Global Esports. We're looking at them right now. Asarai, you're pretty excited about this team, aren't you? Yeah, absolutely, because as Achilles was talking about, this is a team that has gotten a lot of individual pieces that have been proven from their previous teams and have now kind of just been smushed into the Global Esports roster. And again, PhonePe, one of those players that is definitely to look out for, coming from the Finnish scene. Right. Now, we're going to talk more about them, of course, because they're going to be playing. Now, yesterday we saw some teams we were really curious about with our newest addition, Bleed Esports, and, of course, the brand new Gen G playing yesterday. We got 11 teams total. It was 10 last year, and it was crazy way to kick off. It's just good to finally be able to see all of these teams, because we've been wondering, because, yeah, the off-season tournaments, they were there. A lot of these teams had performed in them, but the likes of RQ, we didn't get to see anything from them. We hadn't seen Bleed with Ye in the roster until just that matchup yesterday, where they were unfortunately not able to close out a single map win versus T1, who looked overall very, very strong. But Bleed still has some merit. They're going in a very different direction than a lot of people might have anticipated, not trying to go for the full old Optic play style and really enabling Ye to be this guy who goes off and kind of dominates everybody. It's a bit more of a shared feeling that's coming out, but clearly some things still need to be tightened up. Ye, we got to see him debuting two different agents that he had never played before. Played the Neon on the first map, then we got to see him play the Sky. So these things are going to take a little bit of time. Coming into Kickoff, this tournament is pretty brutal because, lose two, you're going to be out. That's your chance to go to Madrid, down the drain. So I think that with more time, Bleed can become that team that is very much feared and can challenge. hello, and welcome back to Simba. Welcome back to the channel. कैसे हो आप सब? प्लेयर चलो बढ़िया रहेंगे. And today once again we are back with a watch party. We are waiting for people to arrive so that we can start with the chatting with those guys. प्रोफेसर की वेट हो रही है कि प्रोफेसर सर आएंगे कि नहीं. लियो भाई आ गए प्रोफेसर मियाँ लाइव पे. गुड मॉर्निंग मिस्टर प्रोफेसर. स्ट्रीम स्टार्ट कर दी? ओके, मैंने कर दी हुई है. एक बार हमारी स्ट्रीम को हाय हेलो कर दो भाईजान. चलो भाई, अभी आज का जो है हम ये गेम स्टार्ट कर रहे हैं. वेट कर रहे हैं भाई. जीटा वर्सेस ग्लोबल. यो जीटा और ग्लोबल. और मैं बाकी वॉच पार्टी नहीं करूंगा, एक ही करूंगा मैं आज.
पता नहीं, नो आइडिया। कर है ऐसे तो 3 मैच है आज। बता रहे डार्लिंग, एक मिनट। आज है विजिट। अभी तो ग्लोबल और जीटा डिवीजन है। वही बता रहा हूँ भाई जाने, 1 मिनट बता रहा हूँ। हाँ अभी आज वाले बता रहा हूँ, आज 2 मैच और होंगे। उफ भाई कितना पूछता है भाई, 1 मिनट देखने में टाइम लगता है भाई। हाँ जी अम्मा। एक मेरे वहाँ के हेलो देवेश भाई, वेलकम। हेलो भाई, कौन कौन खेल रहा है ये भाई वही बता रहे थे, बताते हैं आपको भी हम एक बार। जीई और जीटा डिवीजन का मैच है गाइस पहला। चेंज कब को करना है? हाँ मैं तो एक गेम के बाद ही जा रहा हूँ ब्रो, मैं ये जी का ही देखूंगा सिर्फ। अरे थोड़ी गालियां वगैरह पड़ती है, अभी मम्मी बुला रही थी। मतलब बीच बीच में पढ़ते रहते हैं। आज संडे भी है, आज बैठे तो रहेंगे, फिर थोड़ा सा अपना व्लॉग वगैरह एडिट करूंगा, कल अपलोड करना, कल या परसों मैक्सिमम। और फिर उसके बाद शाम को गेम खेलेंगे। बस अब ये मत बजाओ, कल का वैसे भी स्ट्रीम पे वो आ गया कॉपीराइट। हाँ कल फुल कॉपीराइट हो गया भाई, पूरी स्ट्रीम डीमोनेटाइज हो गई। कोई नहीं, स्ट्रीम मोनेटाइजेशन में इतना कोई इशू मुझे लगा नहीं, क्योंकि बाय अरे स्ट्रीम के पैसे नहीं आए ना ब्रो, कुछ नहीं मिला उसका। उसी के गाने का गाना चल रहा है, ये गाने वगैरह के स्ट्रीम के जो वीसीटी वाले गाना, वो भी उन्होंने अपने थोड़े डाले हैं। म्यूट कर दो और गेम के टाइम पे ऑन नहीं, मुझे इतना कोई फर्क इतना पड़ा नहीं एग्जैक्टली। वो तो क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि जिस तरीके के लाइक व्यूज हिट हुए थे ना, आई वाज लाइक इट्स फाइन। कितने व्यू आए तेरे? मेरे 300 चले गए थे। नाइस ब्रो, मुझे उससे फर्क पड़ा नहीं। सब्सक्राइबर कितने बढ़े कल?
कुछ कहा नहीं जा सकता मैं कसम से बता रहा हूँ, इसमें तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता किसी को कि ये होगा या ये नहीं होगा। अच्छा नहीं वो नहीं, सब्सक्राइबर कितने बड़े वक्कल? मेरे तो बड़े बहुत काफी अच्छा बढ़ा है। चलो बढ़िया, मेरे भी 6-7 बढ़ गए भाई कल। नच्चे नच्चे से हुए भाई बंदा कह रहा है स्मैश नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई रात को तो समझ आता है भाई, अभी क्यों? पिछवाड़े में डाल दिस भाई। अगर इसने ज्यादा तेज आवाज में बोल दिया तो इसके लौंडे लग जाएंगे। क्यों भाई, इस टाइम पे तो बोल सकता है। नहीं लग रहा है कि ये पढ़ रहा है जोर जोर से, कोई डिस्टर्ब ना करे। तेरी आवाज को क्या हो गया, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तू इतना धीरे क्यों, इतना लाउड क्यों बोल रहा है? थोड़ा और धीरे बोलना। हमने क्या कह रहा है? थंबनेल बदलो। अच्छा नर्ड तेरे को कह रहा है। ये प्रो भाई थंबनेल बदलो। आज किसका मैच है? मैच किसका PRX वर्सेस TLN वर्सेस वो है TLN Zeta जी है पहले। टीम सीक्रेट टीम। अरे बाकी का बताने दो ना भाई। टीम हाँ वही बोल रहा हूँ। टीम डालो ना नया और वाला उसके थंबनेल लगाओ ना, फिर छोड़ो, फिर नया वाला थंबनेल लगाओ। नया वाला हूँ वो चेंज कर लूंगा बीच, वो चेंज कर लूंगा। पुराने भी लगा रहे हो? क्योंकि जी का मैच है ना, जी अगले वाले मैच में थोड़ा है। अच्छा हाँ सारा मैच तो चेंज कर दिया इन लोगों ने। चलो ठीक है बाय। आज जो लास्ट मैच था वो कल पे ट्रांसफर कर दिया। Xiaomi ने स्पॉन्सर कर रखा है Zeta को भाई। ये भाई किसने? लेकिन ब्रो सिर्फ मॉनिटर से क्या होता है, इंटेल ने स्पॉन्सर कर रखा है जी को। हाँ ये बात, अरे मॉनिटर डिफ ना हो जाए ना यार। अरे मॉनिटर डिफ क्या होता है? पीसी डिफ होगा भाई पूरा। मॉनिटर डिफ नहीं होता भाई, पीसी वो डिफ बहुत होता है। रेयरली होता है, जैसे कोरिया का कल हो गया। एक मिनट, मैं थोड़ा लेट रिएक्ट किया उसके लिए माफी चाहता हूँ, पर ठीक है ब्लेड भाई, गुस्सा करना ठीक होता है। अब तो हमारा दिमाग पे स्ट्रीम के तरह डिले हो रहा है। हाँ तो भोसड़ी के तुम ही देख रहे हो ना दोनों स्ट्रीम में तो। और हाँ सुनो भाई, आपकी सेंटिनल तो जीत गई यार कल, तो सुनने में आया। सेंटिनल नहीं जीता, लाउड भाई लाउड जीती है। मतलब बराबर ही था भाई। आपकी सेंटिनल बराबर ही था भाई। मैं तो कल नहीं भाई थ्रो कर दिस भाई, फर्स्ट गेम थ्रो कर दिस ब्रो, बहुत गंदा थ्रो कर दिस। स्पेसिफिक किकऑफ पे आंसर। हाँ ये वाला देखेंगे ना। आजकल सब ये दिस क्यों लगा रहे हैं? मैं स्टार्टिंग से मैं ही बोलता हूँ कर दिस भाई। 100% प्रेडिक्शन जीटा डिवीजन पे है भाई, 100% प्रेडिक्शन जीटा डिवीजन पे है। देवेश भाई आज है जीटा डिवीजन और ग्लोबल स्पोर्ट्स का मैच है। सबको पता, खुद को भी पता है कौन क्या है। हेलो अर्थिल भाई आओ तारा है। सेकंड हम एक ही गेम देखेंगे आज, अगर देखनी होगी और बजे से चालू कर दिया एक्चुअली। अब बोलो ना। हाँ स्ट्रीम तो 10 बजे से स्टार्ट हो जाती है, बट मैं 11:30 भाई बेंकाई की एंट्री देखनी है। सही बात है, सही बात है। वो बैंक की एंट्री देखनी है। सिंपल सुधीन आने वाला बंदा और तोड़ के जाएगा भाई। बेंकाई पर आईजीएल नहीं है ना। बेस्ट ऑफ लक आपको भी भाई, आपको भी आज जी जीतनी चाहिए भाई। ये जो कास्टर की प्रेडिक्शन है ना गाइस, 100% कास्टर की जो प्रेडिक्शन, 1 2 3 4 5 6 7 कास्टर्स ने बोला जीटा डिवीजन जीतेगी भाई। मतलब एक को भी विश्वास नहीं है कि जी जीतेगी। इन सब के मुंह बंद करवाने आज क्योंकि तुझे पता है मूड खराब होने वाला है। फिर उसके बाद एक गेम के बाद स्ट्रीम बंद करेंगे एंड देन वील गो फॉर व्हाट डू वी से, देखते हैं
कुछ तो कुछ प्रिपेयर This- किए होंगे ना, अपने आप तो किए नहीं ऐसे होंगे। हाँ मतलब ये नहीं होगा 13-0 नहीं होगा ऑब्वियसली। 13-0 तो नहीं होने वाला, बट या 13-6 तक तो जाने का पूरा बात है मेरे को लग इससे रहा है। अगर अगर इनका अगर मतलब नहीं sort of मेरे चल वक्त गया ना, न कुछ है, कोलवी का एम मेरे अगर चल वक्त गया ना न फिर कुछ तो है, फिर वादे मेरे जी उसे जीत सकती है भाई। उसे। कोलवी अलग अलग ही चीज है भाई। तुम बोलवी को कैसे जानते हो, लाइक कौन से कॉन्टेक्स्ट से बोल रहे हो? T2 का टॉप टियर है एक्चुअली, वो देखता था मैं। आए? मतलब बहुत फॉलो करता। T2 ऐसा बंदा है जैसे घोस्टो नहीं है वैसा है। हाँ समझ गया, Jet मतलब है, घुस मतलब ओके घुस के मैंने मारना भी नहीं बनाया है। बाकी समझ कुछ नहीं करना। 2 बंदे मारे खत्म, मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं। डिफरेंस ये है ना कि गोस्टो और इसमें ना डिफरेंस बस एक चीज, वो घुस के मारता है, हमारा घुस के मर जाता है। नहीं तो ये भी कहता है कि मुझे मर जाऊंगा कोई नहीं, पर ये तो देके मरना है। हाँ ये दे के मरता है ना, ये गोस्टो वैसा है ही नहीं। चालू हो गया क्या? नो ना अभी कहाँ, अभी तो सब राइट No. गेम्स देख वो आ नहीं गया रहे ना। क्या? किस दुनिया में खोए हो? अबे ये गधे, हम stream लोग नहीं उस देखना पे है। गए स्ट्रीम पे हूँ, लीडर ऑफ द पार्टिसिपेशन उस पे हूँ मैं ट्विच पे देख रहा हूँ। हाँ, मैं भी तुम ट्विच पे देख रहा हूँ earning इतने करते हो, भाई। कैसे पता यूट्यूब चलेगा? पे भाई ट्विच तुमको बेटर है हो जाता भाई। क्या चूतिए को, सुबह सुबह आके मेरा खा रहे हो दिमाग, कल साला अर्निंग पे खा रहे थे, आज यहाँ पे खा रहे हो, क्या हो गया तुम्हें? सही हो ये सब गलत हो गया तुम्हारे साथ। Earning करेंगे नाडू भाई, हॉर्निंग हॉर्निंग अर्निंग करूंगा मैं, बिलियन में earning करेंगे। हॉर्निंग करेगा भाई, हॉर्निंग। और वो टू कम्पीट द टीम्स। हॉर्निंग नहीं होना। हाँ नहीं, अगर पॉलवी और अगर रस ने ढंग से एजिटिंग कर ली तो जीत भी सकते हैं, पता है। अरे जीतेंगे भाई, ये बंदा जीटा वाले जीतेंगे, जीटा ये वाले। बंदा ये कल सेंटिनल्स के बारे में बोला था कि जीतेंगे। वही भाई, अब मैं मैं एंटी पनौती कर रहा हूँ भाई। हाँ ये एंटी पनौती जीटा वाले जीतेंगे, सीधी सी जीटा बात वाले। है। देख जीटा ने बहुत ऑफ सीजन में स्क्रिम्स खेले, ठीक है। अरे तो इन्होंने कम ग्लोबल खेले। स्पोर्ट्स ने घंटा कुछ नहीं खेला। अरे खेले हैं भाई, तुम्हारे को कैसे पता नहीं खेले? पता है ना, पर सब कैसे समझाऊं तुम्हें। अच्छा ठीक है भाई। डिस्कॉर्ड सर्वर्स में है कुछ हम ऐसे वहाँ पे दिक्कत है। मतलब ये जो ये हुआ था ना क्या कौन सा हुआ था ये अभी? कन्वर्जेंस इसके इसमें बाद थर्ड ये आई I थी think भाई। 6 या 7 खेले। हाँ तो इसमें थर्ड आई थी भाई, ग्लोबल। लाइटनिंग चार में से फास्ट 3, 4 में से थर्ड नंबर पे आ गई, कोई प्राउड नहीं है। लाइटनिंग फास्ट बोल रहा है कि इस बार हमें अंडर एस्टिमेट मत करो, और वो भी ना करो, क्या बोलते हैं, लाइटली भी मत लो, क्योंकि हम लोग प्रिपेयर आए हैं, ठीक है। हम पैसिफिक में एक न्यू वेव लेके आएंगे, और बस देखते रह जाओ। उन्होंने अपनी वीडियो में ये बात यही बोली। बोलती है भाई, हर टीम यही बोलती है। अब ये थोड़ी बोलेगी मैं हमने तो पेपर गेम ही नहीं भाई खेले, नहीं, ये पेपर थोड़ी बोलेगी भाई। नहीं, पेपर एक्स ने तो कुछ बोला नहीं। पेपर एक्स ने बस दिखा दे कि हमारी औकात इधर खड़ी हुई है, हम यहाँ खड़े हुए, हम तुम्हें नीचे देख रहे हैं, तुम ऊपर नहीं हो हमारे। पेपर एक्स तो डायरेक्ट कुछ बिना बोले बस बताइए कि हाँ हम अरे यहाँ तो यार वो फिर है ना टॉप के। पेपर एक्स है ना भाई। भाई फिर वो चैंपियन जीती रहेगी भाई। रफ्तार पाजी रात को लाइव करना होता है भाई। कल 8 घंटे लाइव किया, आप कहाँ थे कल भाई? बोलना नहीं पड़ रहा कि हाँ हम लोग को लाइट कल 8 घंटे मैंने लाइव किया भाई, तब कहाँ पर थे आप? रात तक, दोपहर से स्टार्ट करके रात को 9-10 बजे तक। वो ढंग से कर पाए उसको यूज। आज अभी वॉच पार्टी कर रहे हैं, रात को स्ट्रीम भी करेंगे, अपना खेल तो नॉर्मल करेंगे। अभी जी का मैच है, उसका वॉच पार्टी करेंगे अभी। आधी प्रेडिक्शन कर भाई, कौन जीतेगा? जी ई जीटा डिवीजन। फॉर मी जी ई ऑलवेज विनिंग, जी विनिंग ऑलवेज। मेरे दोस्त गेम खेल रहे हैं, सबको पता है कि हाँ यहाँ कुछ होने नहीं वाला। देखने में क्या है, कुछ अच्छे प्लेस निकल जाए, क्या पता। हाँ नहीं, उनका तो निकलेगा, किसी एक का तो निकलेगा। तो बढ़िया बात है भाई, क्या ही है, इंडिया के लिए तो सबसे अच्छी बात हो जाएगी। कंटेंट भी निकाल लेंगे भाई, थोड़ा सा रिएक्टिंग टू ग्लोबल ई स्पोर्ट्स। नहीं वो सब हमारा रिएक्शन कोई नहीं देखना पसंद करेगा। क्या ही प्रॉब्लम है भाई, जो भी है तो वो प्रोज यार। और तुम तो ये ब्रो ये तुम डायमंड ही पहुंच जाओ यार नर्ड भाई, वही बड़ी बात। अरे बहुत लोग बहुत प्रोज, यार ये अरे भाई बहुत प्रोज है जो डायमंड असाइनमेंट के ही है सिर्फ, मतलब असाइनमेंट के भी नहीं, डायमंड के है।
नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे है भाई। हमें भी दो करा। अरे बस भाई, कर तुझे यार बताऊं? ब्लेड, पागल हो गया अरे तू। नूब भाई जो इंडिया के अगर T3 टीम्स भी है ना, T3 वो भी लीस्ट अरे नहीं होता है। वो मैंने देखा ना है। फिनेटिक और DRX वगैरह वाला ना, उनके मैंने कंटेंट देखा ना वीडियो, तो वो ऐसे गेस द रैंक टाइप खेल रहे थे। T3 की तरफ तो कोई मूवी भी नहीं देखता भाई। क्या? भाई नहीं ऐसा नहीं T2 होता। T1 बस। हाँ वही तो। अरे नहीं मेरी बात तो सुनो, तो अरे मैं भाई, उनका ये देखा क्या था ना वीडियो, तो वो डायमंड प्लेस वगैरह आ रहे थे, वो कहते तेरे से ऊपर रैंक है, तेरे से ऊपर रैंक है, ऐसे कह रहे थे भाई असेंडेंट वाले को। तो चिढ़ाना होता है वो। अरे बनता नहीं तो- उनका लिटरल रैंक, वो खेलते ऐसे कॉम्पी कम ही खेलते हैं ना वो। हाँ अच्छा, वैसे तो वो अलग बात है, पर मैं कह रहा हूँ ये नहीं कि इससे कभी नहीं मतलब इमॉर्टल पहुंचा होगा। हाँ क्योंकि ऐसे पहुंचे तो T2 होंगे। टीम्स भी ना इमॉर्टल 2 मिनिमम मांगती है इंडिया में। अब हम्म, T2 T1 तो इमॉर्टल 3 से कम देखती भी नहीं है भाई। बात वो भी नहीं है, देखो सिंपल है कि जो उस लॉबी में खेल अच्छा से परफॉर्म कर पा रहा है ना, उसको टीम में हाँ ले लेंगे। ले लेते हैं, फिर वो इतना उसका रैंक नहीं देखते। वो रैंक वहाँ बाहर की टीम नहीं देखी, इंडिया में देखा जाता है। हाँ वो ऐसा होता है, एक स्किल भी आता है ना कि सिर्फ एक मतलब अपने जो एजेंट है वो ढंग से खेल पा रहा है बंदा। बट हर चीज के बाद गलत भी नहीं है। ऐसा नहीं क्योंकि- होता भाई, इमॉर्टल से थोड़ी ना है भाई। ग्रेडियंट वगैरह जो पहुंच गए हैं कि उनमें और एक डायमंड में जमीन आसमान का फर्क होता है भाई। वो नहीं बोल रहा मैं, कहीं कहीं बाहर भी कुछ हो, कहीं भी हो। अरे चलो हमें क्या बात ये है कि वो लोग प्रो खेल रहे हैं, हम नहीं खेल रहे। एट लास्ट बातें आती है वो लोग प्रो खेल रहे हैं, हम नहीं खेल रहे। मैं तो खेलना भी नहीं चाहता भाई, मैं तो कास्टिंग करना चाहता हूँ। इसी बात पे कास्टिंग करके दिखा। करूँ? नर्चिस बैठा हुआ है, नर्चिस के साथ बात कर लो। कल सेंटिनेंस वाले में कर, वो वीडियो निकाल उस पे कर। अरे LCK भी अपलोड चल किया है रहा तो। है, LCK भी चल रहा है साथ साथ। ये नहीं बात उन्होंने गलत नहीं बोली है, यहाँ पे अभी चल रहा है एक्चुअली। यू कैन, तुम खुद की कास्टिंग कर सकते हो एक्चुअली अभी। कास्टिंग करने में क्या है, अच्छी बात है भाई। तुम्हें गेम का हायर हो जाओगे, और बढ़ेगा। हायर हो जाता है और उससे बंदा कास्टिंग करने वाला वो तो। ये ब्रो गाइस जो भी देख रहे स्ट्रीम को एक बार लाइक कर दियो, इन चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। कौन आया? मामा भाई, मामा भाई मैं तुमसे कट्टी हूँ, कट्टी 100 साल की कट्टी। भाई कट्टी तो भाई अपने जेंडर तो सही रख भाई। क्यों? कट्टा कट्टा है ना, कट्टा है भाई तो कट्टा कट्टा। गोली नहीं होते, कट्टा गोली का मतलब नहीं बोलते कट्टी के। देहरादून में जेंडर न्यूट्रल था कट्टी। 100 साल नहीं की कट्टी कट्टी। कट्टी कट्टी ही बोलते हैं, कट्टी ही बोलते हैं उसको। कट्टी कट्टा तो भाई कट्टी गाय के बच्ची होती है भाई। मम्मा भाई आ गया आगे एंट्री हो रही है। टीम एंट्री हो गई, टीम एंट्री हो गई। हाँ मामा रात भाई। को जब मैं वापस आया मेरी माँ ने मेरे गांड में बेलन डाल। अरे बस बस भाई। मम्मा भाई हाँ क्या हाल है? भाई एंट्री आ रही, बैंक की एंट्री आ रही है, बैंक की एंट्री आ अरे रही पेन की एंट्री। हाँ रुको यार, अंधा मेरी जान। है। बस 2 मिनट भाई। शैडो कैसा है? अबे आने दो। अरे रुक जाओ, अरे स्ट्रीम देखो सब भाई, जल्दी देखो। बेनकाई कुछ तो कुछ करेगा शायद। भाई करेगा तो मजा आएगा भाई। ट्विच पे आ जाना, ट्विच पे आ जाना, पहले बता रहा हूँ। हाँ ट्विच पे आ जाना भाई, क्वालिटी मच बेटर है, इसकी डिले भी नहीं होता है। हमें 1080p की क्वालिटी है बट अरे क्रिस्प है ना, क्रिस्प है, बेटर है। जी फाइटिंग जी हाय गूज़ बम्स तो यहाँ है। यहाँ जगह ही नहीं है बेनकाई के लिए कुछ करने को यार। देखते हैं, वैसे नहीं कर रहा कुछ, सिंपल एंट्री है। सुधर गया क्या? हैं? ये जीयू का अपना एंथम आया है, ये तुमने सुना क्या? अबे ओ ये ओ नाइस बे। आये रोसोरवॉट भाई, कितना छोटा लग रहा है भाई उसके सामने। भाई क्या देख रहा है उसका चलने का स्टाइल तो। भाई पोल भी कितना छोटा लग रहा है भाई उसके सामने। भाई हाइट भाई डिफरेंस वो बंदा बहुत लंबा है। भाई बहुत ज्यादा बड़ा है, जायंट है भाई। लिटरली वो 8
भाई 7 फीट है भाई। एल्व्स थे, सिंड्रेला के जो एल्व्स थे वो लग रहे हैं भाई। सही बात है भाई, पोलवियस के सामने वही यहाँ तो लगा फिर था भी सब लोग सेम साइज के लग रहे हैं, एक को छोड़ के। उधर तो वो अलग ही लग रहा है भाई, वो अलग ही खंबा भाई, पहाड़ है भाई। अगर वो कह रहा है कि अगर तुम पहले देख लो टेक्निकल डिफिकल्टीज तो नहीं बढ़ने वाली, टेक नहीं, कॉस्ट आज होने वाला आज है, नहीं चेक होने कर लो वाला, पहले। आज नहीं हो रहा, आज नहीं हो रहा। कल फर्स्ट डे था ना। मारूंगा भाई टेक पास तो। ब्लेड बहुत गुस्सा होने वाला भाई, कल पूरा मैनेजमेंट ब्लेड का ढीला था। परफॉर्म नहीं किया ना, अगर जेडा ने परफॉर्म नहीं किया ना भाई, इनका कोच बैठ जाएगा इस ऊपर होता है। ट्विच का वो लिंक भेजो मेरे को, मैं भी देखूंगा। ये बाहर कौन गया? अबे कोच कैप्टन और कोच मैप उठा रहे, मैप पे क्या मैप पे? अरे ये नहीं मैप पे क्या, मैप पे क्या? लेट्स गो लोटस, ब्रीज वन। अरे बड़े बड़े मैप छोड़ दिया भाई, लेट्स गो। अबे चुप तो रहो भोसड़ी वालों, बड़े बड़े मैप्स गए। Bind आइस बॉक्स भाई, जी का लगातार अटैक। सनसेट लेंगे क्या लास्ट में? स्प्लिट बैन, जान को ले रखे ना स्प्लिट बैन, सनसेट डिसाइडर। लास्ट टाइम सनसेट पे भी जीते थे ना। पर जी ने दोनों में डिफेंस पिक किया, पता है? जी ने दोनों पे अटैक है, जी का दोनों पे अटैक है। अबे दूसरे राउंड में, मतलब दूसरे राउंड में मिलेगा भाई, तीनों मैप्स लगातार जी पहले अटैक करेगी भाई। अच्छी बात है ना, डिफेंस स्ट्रांग है इनका। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अरे नट भाई बोलो, ट्विच में डिले तो नहीं है ना? नहीं, ट्विच में बिल्कुल 100% सही चलता है। नहीं उसमें डिले है नहीं। डिफेंस में एक ऑप्शन आ जाता है ओडिन का, फॉरवर्ड भी नहीं होता है। हाँ भाई नहीं, कल अटैक में ओडिन हुआ है। अरे कल अटैक में ओडिन पेल दिस भाई। वेव प्रूफ है। अरे जीते, क्रेजी का चलाया था, क्रेजी बढ़िया खेला था भाई कल। बीट तो हार गई कल मेन तो कल तो मेन टेक्सचर ने टेक्सचर ने डिफ कर दिया भाई कल। काली जुआरी साले वो काली जुबान तो है तू, जब तो कह रहा हूं पनौती तू चुप रही है। भोसड़ी के चुप कर जा तू। चल हेलो गाइस, हाय ब्रो, हाय अमोक भाई। अमोक भाई कैसे हो? I'm also good. That's good. I really am honestly just wanting to see how Heron plays on that initiator as well, especially that Vine is going to be. I think Amok bhai, I have a suggestion. Instead of watching on YouTube, watch it on Twitch. It is much better. We have to stream the Can't you stream like Twitch from here? We can, but we have to stream this. But is the Sky still going to remain super prevalent when it comes down to Bind? She was obviously a mainstay on most maps, most played agent that we had last year. But we have seen some teams starting to stray away from it after the recent nerf. तो उनसे पैसे ले लियो। Sky yesterday again. शैडो में तुम तो रहने दो। But is that तू रहने दे। मेरे पास पैसे देखे ना, मैं गरीब खुद हूँ। एक बारी को मैं कह दूंगा, मगर अर्चित ना बोले पैसों के लिए। भाई ब्लेड ने मुझसे 1000 रुपए मांगे थे, मैंने भाई के भाई दे दिए थे। अरे बाबा, हमारे मेरे को भी भेजना भाई। नहीं पापा इसको देख लेंगे स्टेटमेंट, पापा स्टेटमेंट देख लेंगे यार रहने ना। वो तो मैंने बोल दिया हल्दीराम पे खाना खाया ना, तो भाई 1000 रुपए का खाना हो गया। बंदे मेरे से वेलो का टॉप अप कराते भाई। जब वापसी में मुझे 1000 रुपए मत दियो, मुझे वो दे दियो। हाँ भाई उसको वेलोरेंट पॉइंट वीपी पॉइंट्स दे दियो। हाँ 840 का आता है, दे दियो, वो दे दियो। कोड मेरे पे सबसे पहले आता है। मैं ऐसा चाहूँ कि कोड को लेके मेरे वहाँ पे रिडीम कर लूँ पैसे। अबे जी वाले कहाँ है भाई? हेलो, बैठ गया। अबे ऑडियंस में है ही नहीं भाई। भाई चिल्लाओ यहाँ पे भाई।
style तुम हाँ या ना बोलो ना. to try and support that double duelist if Zeta. you want to run it. Is it Zeta gonna be something division. like Viper Harbor have that double controller really just Zeta set up these win, भाई. multiple walls so you can just take the map a वो fraction Zeta at के a बैठे time. हैं, Make sure मेरे पास everyone पैसे is होने भी चाहिए देने के लिए हमें off भाई. this मेरे पास कुछ information. नहीं है. Or are you going to गरीब have हूँ a मैं. bit of a more straightforward approach? Is it going to be that sky? Is it गरीब हूँ. going to be मेरे मम्मी Viper पापा again मेरे को in that गरीब mix जन्म दिए. with a double initiator instead? Blade Well, boss भी कहाँ है? I'm really curious to see what this game is going to look like because again, so much time has transpired since we got to see both of these teams in their off-season tournaments, and now they have the full roster up on stage. So I think that this is going to be a very different ये क्या flavor. ऐड आ The रहा power है levels for both of them, I think it's really hard to judge where they're going to be. स्पॉन्सरशिप लेना आया हूँ. In fact, this entire group A again, Nice. these two teams are part of the भाई दोनों टीम्स के पीसी जोवी के ही है भाई. हमारा बैनर लगवा देंगे कॉलेज में. पैसे होने भी चाहिए पापा. मेरे नहीं है पैसे. बैनर क्या लगाओगे? What are the implications of the winners and losers of today's Zeta Global Esports match? They'll be facing off T1 or Bleed. Yes, I actually had to double check my notes for that one. अरे शुरू करो भाई. हो गया उनके मॉनिटर में तो हो गया select. Select क्या मैच के अंदर बैठे हुए हैं. डबल स्मोकर लेके जा रहा भाई मैं बैंकाई को देखना चाहता हूँ कैसे खेलेगा बैंकाई. साइफुल. ये ड्रीम. Let's go. भाई ब्रिम खेल रहे भाई. The sky still does stay for Zeta Led Division, by so lineup Euron's going to be time. bringing out that more. भाई पे lineup बहुत डबल इनिशिएटर. overall here. नहीं लाइनअप उतना करेंगे नहीं ना. Esports kind of leaning into something अबे new. एग्जीक्यूशन भाई सारे लाइनअप जीटा डबल कंट्रोलर और ग्लोबल डबल इनिशिएटर. But that KO, so कल एपैक जो निकाला था वो देखना देता. गरीब और तुम कोई जोक मार रहे हो क्या? नहीं भाई सच बता रहा हूँ मैं नहीं हूँ. मामा बता भाई कहाँ मर गया तू? भाई बहुत अमीर है ये. तो मैं मैच एनालाइज कर. भाई प्रोफेसर बहुत अमीर है भाई. मैं ज्यादा किसी करूँ बस कोई नहीं कर. उसके घर में लैम्बोर्गिनी का जो भैंस है ना वो है भाई. अबे चूतिए सालो चुप हो जाओ. भैंस की बात करिए. लैम्बोर्गिनी भैंस. अच्छा गाड़ी नहीं बात करी. वो भी नहीं है मेरे पास. इसने अपनी भैंस का नाम ही लैम्बोर्गिनी रखा है. वो भैंस का दूध बेच के लैम्बोर्गिनी खरीदे गए. इसने अपनी भैंस का नाम ही लैम्बोर्गिनी रख दिया. अपने घोड़े का नाम फरारी रखा है. ब्लेड ने तो बकरी पाल रखी है. सांप का नाम कोबरा है. ईद पावे तो बकरी काट दे वरना दूध पी ले. Only time will tell. We are ready for the first game of हम today. तो ये We're दुम्बा gonna काटते see हैं. who is fighting harder once more. We're gonna go into दुम्बा कौन सी लुल्ली का नाम है? दुम्बा बकरी का बड़ा वाला जात है. वो कास्टर. भाई ये कास्टर डेस्क कितना सुंदर बनाया हुआ है यार. हैं प्रोफेसर? कास्टर डेस्क कितना सुंदर है. मतलब बैकग्राउंड कितना सिंपलिस्टिक जैसा और कितना सुंदर जैसा है ना. बहुत बढ़िया लग रहा है. Yeah, that's some distinct differences. And then, of course, the Des mentioned Sky. I mean, I have my doubts, to be very fair. The Sky changes, I think, hit Bind so hard because she is so impressive. On that defensive side, over on B long, what is your answer to keep control of that space and get that information on the pistol? Quack, it looks भाई like 1-4 का split लिया Zeta ने. out from Zeta to take control of that Start part of the में. map. Already, and that's just such a और full 5-man push है. Oh, yeah. भाई ये क्या ट्रिप लगा रहा है? वो वहाँ फंसते हैं ना भाई वहीं जाते थे. रुक जाओ अभी चुप हो जाओ. नहीं भाई हमारी तो कमेंट्री चलती रहेगी. चलाओ क्या कर लेगा? क्वेश्चंस मत पूछो. म्यूट कर रहा Certainly one that's welcome. I think Global Esports, on the other hand, though, maybe just going to take things slow for the time being. They are starting things out. This is a bit of a debut as well. Now, Bankai coming in. They are starting things off, pushing deep in. Nice smoke भाई. भाई बी पे देखना पुश कैसे कर दिए भाई सभी चारे. Yeah, the wingman, of course, makes things a lot easier on the pistol as well. That low profile. जी का पिस्टल सबसे स्ट्रांग है पता. The big question is no opposition. Global Esports should have an inkling that either they need to push out or be very wary of the play. भाई मैं चुप रहता है. चुप रहना अर्चित. बोलने वाला था मैं अभी वो बात. तू मत बोल भाई. तेरा बोलना बहुत डेंजर है. Exactly. Depth staying hidden in case someone pushes into him. He might be able to catch off a couple of hits. Dep does find one onto lightning fast. That's a good start now. Laz got the info, but not quite the tags. Russ holding up by Dice, getting a double kill now. Oh, hello. Seconds left, and Zeta picks up the round. I mean, I was about to comment. All right, Russ wanted to talk about fire. Oh, He hello. wanted to say that we can all aim and shoot. Sure, you proved that in the first round, but guess what?
you still do have to play around the spike. I know some people like to rant about shooting guns in Valor, but there's also an objective. Oh, we all got kind of distracted in that moment. It was so odd, but it is स्पाइक what पे it एक is. तो रहना ही And, I चाहिए mean, वो था ना रास्ता ना लिखना लेट हो गया just like that. I think it's a very good new look to them. Yeah, definitely. For any of you who have been waiting for Zeta to have this evolution, at the very least, they are committing to this color change. And with the rookies, too. Let's talk about that. They touched upon it on the desk, but two members who started as Academy players under that Zeta banner, now both getting the shot onto Tier 1, and a great triple from Uran. He does drop to Russ, but still, damage felt and done. And the force from Global Esports just kind of falls apart. What is this? It's so strong. Atarashi Zeta division, and they are still ringing true. Benkai and Lightning Fast, though, picks up the spike, now looking for a new option. I mean, what do you do here? Like you mentioned, Quack, they forced, so they have to make something happen in this round. Saving on a force with a Stinger and a Spectre, not something you ever want to have to choose to do, but it's also like it's a 2v4 with the Cypher and Viper on attack. You gotta hope the stars align. You are stuck between rock and a hard place, and it's only the second round of your very first match in Kickoff. Rock in a hard place. What are some other hard places? I can't really think of anything. Well, I mean, this entire map is just walls everywhere, and it's not looking like any of them are about to budge. Don't mind the bait out. Just gotta walk through. I mean, 30 seconds left. Nice, Benkai. And that's a great new look as well. Okay, the first step is there, a weapon upgrade, and they have control of showers as well. 3 players to retake. This is not impossible, especially if Benkai has the Bulldog. They are thinking that he's probably up around showers, but he's actually wrapping back around the rendezvous. Benkai lineup कहाँ से खेलेगा? नहीं भाई बड़ी बात है लाइटिंग पास as में well. The post plants are available too. I mean, Global Esports, they don't have as much time as they think they do. Or Zeta. I like how they're clearing their bases though, using the incendiary and everything. Now finally getting information and then the tag to go through. Still good enough. They will be able to pick up the round, but almost dicey. Yeah, I mean, I love the fact that they're still counting the options for that post plant, right? They were already pushing out, already wanting to make sure because they have the numbers advantage, we want to get in contact and then we can have some stick onto it once all that lineups come through. But Uran, I mean, a great hold here on window, and we were mentioning Uran and Huron, both these guys. Uran's the one with actually much less experience coming straight up from the Academy roster, not even having a chance to go through Tier 2 and Challengers Japan. And this is a start you want to build up that confidence for some of these younger players. Definitely. I mean, experience is one thing, but confidence is such a big factor. And you can tell that he actually he's starting to feel a little bit of it. The timing on that snake bite was perfect, and then just spraying things down as well. चुरा ली हाँ भाई मैं बोल रहा था prevalent towards the B site. Definitely have a little bit of चुरा लिया यार तेरा लाइनअप बैच No, with the force. हमारे कोच का लाइनअप खा लिया Just don't greed, right? I mean, this is a rifle. Nico, textbook through and through. No need to push out, especially on a map like Bind. I mean, sure, with the sky change. भाई दोनों साइफर बैठे भाई शावर पे Need to worry about timing. हमारे कोच का वो चुरा लिया यार have the cipher setups on a short, holding on to showers. You have backup from Sugar Zero. I mean, this is just up to G on when they make the move. Dude, they're playing with the timings as well. Sky Smoke well timed by Sugar Zero. Now popping over with the incendiary. Just blocks off the plant. Last is having a field day with these shots. Them coming through from heaven as well. There's the second one. Last is going to be Russ, and he's pretty much pinned down up by lamps. I mean, so many people around the world used to dream of days like these with Zeta. Quick decisions, fast rotates, the backup from depth, the trade angles being held, the decision making so far. I know it's very early, just a couple rounds into the first बहुत map. young player है बोलते रहे T2 से डायरेक्टली इस यहाँ पर आ गया वो चैलेंजर में Cloud9 का utilize the new forces that they've upgraded with. I feel like they're not showing off too much in their books just yet. I mean, they're randomizing some of these positions well. This time, last back in towards Hookah. And here's the big thing, though, right? I mean, Global Esports, because of that force, we gotta remember, after the pistol, yeah, the score should be a 3-0. This is where GE starts to show what they prepped, why they picked up this bind as well. If they don't, though, that's going to be health pay. I think that's why there's this switch up in positioning from Zeta as well. They recognize that fullback coming through. Uran trying to play nice Russ. without the information, just gets swung on pawn by Russ.
Sugar Zero's the only one left, and he's only got a Sheriff, so gonna have to back off and just kind of give them the site. Global Esports should keep in mind that this is, in essence, the bonus for Zeta, right? So GE shouldn't be losing too many weapons. I would say one at best if you want to make sure that you can kind of catch back up in the long haul, trying to keep hold of U-Haul as well from Phoebe. But he is alone, everyone waiting for the post plants here. Nice, Still, though, I mean, you're absolutely right. They don't want to lose the weapons. They want to take them away from Zeta. Pushing into the sky, smoke, Polvi. The finished gun is shooting all over the place. And he's rotated. This is so hard to read from Laz. I mean, Lightning Fast is going to get it. Let's go, Flawless. That wraparound from Polvi. Shot. Why Polvi failed this, right? Polvi's one of those members that I think fans from EMEA who have been following closely into the challenger scenes have kept their eye on this guy. But such an unknown factor, especially in Pacific. I mean, not many people would have been keeping their eyes on there as there's such a wide pool. But he's proving this is why my teammates, my coaches hype me up. I'm able to lock this down by enough time. And then the precisely that's उनका kind of mechanics what भी same होता है Coach भाई, वो Spin was बना हुआ talking है, about वो during मारते the हैं। interview. This is the guy that we want अंदर to keep our eyes हम on, लोग बैठ ही and it रहते shows हैं। exactly why the decision to स्प्रे push कंट्रोल Lance करते was हैं। so big. They knew that हेड was का एम going रहता है for ना, a slower तो उनके retake, so they उनको knew how to नीचे do मारने पता है, का हाँ। टाइम हेड पे होता है, सबका एम हेड पे होता है। उस हेड के एम को हटाने के लिए वो एक बार क्राउच कर देते हैं। हम क्या करते हैं, क्राउच होके शुरू हो जाते हैं, पूरी 25 गोलियां। ये क्राउच मारते हैं, खड़े होकर ही मारते हैं, लेकिन You used to be वही able to play it a lot more Timing होती है lax क्राउच। because the timings on your guiding lights, you could Spike really करने का just try work होगा it ना? off of that Spike तभी तो डाल 20-second दिया timer जरूर। here and there. And now, yeah, you can see Huron's like, I don't want to use these too early because they ain't coming back. Gotta be ready for that, yeah, potential retake. He's gonna use the dog instead. Trailblazer clears out, doesn't see anything. बहुत होल्ड कर रहा है यार ये जी। Blaze King might have heard it. That's why he falls back. बात ये है ना, Zeta भी नहीं push कर रही। They are waiting for them to push. Dizzy, which he gets back in 10 Defense है ना, seconds. defense I में mean, क्या ही Blaze push King is करेगा? utilizing the counteracting from Gecko to Sky so well. Might be the difference. कोई Of फायदा भी तो still, नहीं you है gotta कुछ keep in mind करके। there are 3 players stacked Cross up बैठा के for बैठे position हुए हैं। on the A site, and Lance will be able to Random clean shot the लगे first भाई। head. Dev with the positioning, but tries to sneak through, but burns alive. Blaze King shoots him down. Last plays are around the Cybercase instead, but here comes Thrasher. Has to shoot it, has to reload, tries to run away, still alive. Polvi going in for the chase. Benkai wreaks a bit of havoc from Lamps instead, and still, here comes Polvi. Just no fear. It doesn't matter if it's a smoke or a molly. He'll just run right through it and frag you out. With that, भाई Huron's क्या कूदा है बे one इनने। left for this retake. Benkai on the angle, just wall ये ना banged देखते some डैमेज आएगा dice. कुछ तो आएगा। Oh boy, I हाँ think a lot of us are gonna have to get ready to eat our words. As हाँ, हो Global गया। Esports, they are firing as soon as they pick up हो those गया rifles. भाई, मेरे हो गया। I am loving this. I अरे mean, कहाँ yes, गया? we had Zeta Division and we are hyping them up, but at भाई the same time, stretch screen के there's साथ खेल just रहा so है। much going मजा on आता है भाई। for Global Esports. I think we had quite a bit of doubt. A lot of the GE fans are still supporting them. And it's just really lovely to see, you know, we are very familiar with Benkai the Entertainer, the memer, but here comes Benkai the Fragger as well. And he used to have those moments when he fragged, also specifically on the Cypher. So it's great to see a return to form. Obviously, some known factors like Blaze King and Polvi up to a certain extent, but it's good to see Russ and even Benkai. नहीं Polvi। Uran says, you know, I'm one of those new recruits as well that's picked up for talent. I think this is one of the Halfway round है। wants to be a little bit careful. Can't underestimate Zeta Division. Yes, they aren't eco. Yes, it's sheriffs, but going in for the one-on-one like that, you're still landing the shots. No. Russ, though, on the other hand, just going to waltz right into Ace. Russ का ult है, plant करके ult मार I सकते mean, हैं। listen, I don't want to run out of all of our storylines too early, but a fragging IGL, that's a rare breed right there from Russ. So, looking good so far for Global Esports. Leadership from EMEA. Last though is still. अब उसे बंदा दिखा उसका। हाँ बंदा दिखा वो शावर चेक कर रहा था ना, शावर से कोई पिक न ले। हाँ क्यों देख रहा, रस देख रहा था ऊपर। Wall lost over to Global Esports. Benkai plays so crafty. He's Oh, got line up by. in a row now through Plant some of थोड़ा those walls. पीछे He था। just keeps tabs of the pre-fire. Yeah, I mean now that he's not IGLing, you know, he's got a lot गलत more line time up to है। think. And here comes सही है। Blaze King. सही है, बिल्कुल सही पड़ी है। For some of सही है भाई। भाई बिल्कुल सही लाइनअप पड़ी है भाई। बिल्कुल प्यारा। बहुत बढ़िया। Let's go baby। पूरा गोले पे ही होती है। मैं केओ का देखा ना, केओ का देखने के बाद मुझे लगा सबका गलत जा रहा है। तो बस ऐसे ही वो कर रहा था। अरे केओ ने उसने जस्ट ऐसे डाल दिया। हाँ नहीं रैंडम नहीं था, उसने भी लाइनअप देख के डाला था। It's off of the
नहीं वहाँ से लाइनअप है हाँ वो लेकिन उसने वहाँ डाला था डिफॉल्ट का डाला था रैंडम नहीं था बिल्कुल ही वो गाड़ी के ट्रक के पास वाला अरे उसने सोचा ट्रक से टकरा के वहाँ आ जाएगा उस पे हाँ वो हल्का सा वहीं पे पड़ गया quote-unquote mistakes they're making are basically reactions to utility, but they don't know the exact result of it because they can't see the other side of the map. A little bit hard to pinpoint that right now, I think, Will, because, you know, it's also the eco round. भाई क्या नाइफ है So they want to get a little bit more information before going in for that. अब अभी तो इनके पास मैचेस हैं ना बहुत सारे ये एक मैच थोड़ी ना है कोई ना बोल भी नाइस वन भाई ये कुछ अलग ही खेल रहा है यार He's caught in a duel against him and Benkai too. He is doing a pretty good job at Pele se las gaya. Tries to go around the trip, but shut down by Benkai. 3v3, rush 2 HP. Up above heaven. He's got the operator and he's firing some shots. You're getting one from the back base short as well. Now it's trying to spot up Blaze King. The spike, however, 3v1 ही है rush 2 नहीं rush को तुम neglect नहीं कर सकते अच्छा अरे उसका 2 है 2 HP है ना ले एक निकल गया There's the first Viper's Pit from Euron though. I don't know how effective that's going to be given Depth's position, but Euron shows that he can hold his own. Rust at 2 HP. अरे निकाल दिया भाई निकाल तो दिया भाई Credit where credit is due, he still did get Depth before भाई डेप को निकाल दिया भाई अपना ट्रेड खुद निकाल दिया अगर वॉल्ट इस पे ना लगती ना तो निकाल सकता था वो हाँ निकाल सकता था नहीं लेकिन वो रैंडम स्प्रे में आ जाता है यार 2 HP तो था वो He says, I'm just buying time until backup arrives. Depp got that kill as they were trying to all rush into showers to take out Laz, and that keeps the numbers advantage for Zeta Division. Really good comms and awareness of what my mission is as that lurk who's kind of now caught out in an island. Especially on the defensive side. I mean, that's the new Zeta Division. गाइस 4 लोग देख रहे हैं जिसने अब तक स्ट्रीम को लाइक नहीं किया लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू स्ट्रीम जी का मैच चल रहा है अगर आपको नहीं पता फर्स्ट गेम जीई वर्सेस जीटा डिवीजन फर्स्ट मैप यहां पर जा रहा है एंड वी होप कि भाई फुल कास्टर प्रेडिक्शन जो है वो जीई के अगेंस्ट है नाइस शॉट भाई सो या एज आई वाज सेइंग जीटा डिवीजन के तरफ पे दिया हुआ है Now we know that there's an op still ringing around. Depp with the second kill. They were trying to pinch him down. Depp निकाल दी सही. Valorant to set him up and he goes in for even more. एस नहीं मिला अल्ट से मर गया भाई बेंकाई. It's a flawless win for Zeta Division. Depp was putting up crazy numbers last year in Pacific too, right? In terms of individual stats, in terms of operator kills, things like total kills, he was topping the charts across the board for duelists. So it's great to see him not miss a single beat as he picks up the scope. It's like a nice reunion. Well, yeah, for sure for Deb. I mean, he's been waiting for this in the offseason. Didn't play in every. Blaze King was a bit lost over there. What I wanted to mention as we were going into this round is, I honestly think Global Esports is playing to their composition strength a bit more. I think Time out. But these moments from Laz, these moments from Uran actually as well, and then देखना दो टाइम आउट है एक टीम के ब्रो फर्स्ट हाफ में अच्छा लग रहा है भाई दो टाइम आउट है ब्रो दोनों टीम्स के पास में you can even make this up to like a 5-7 and things like that. I think they should look somewhat okay because it's gonna be tough. अरे भाई इसका ये simply without double controllers here on. ये स्पिन है स्पिन है भाई ये स्पिन They only have that one. कोच सा lightning fast whatsoever, but it's the composition. Well, it's one of those things where it's like you set up the screen to into U-Haul and it's like when lamps. Well, then now you have to rely on the poison cloud. You have to get kills. You have to push out with the other utility, which there's a lot of. I mean, we've seen these combos yesterday as well with things like the flash drive, you've got the paint shells. There's a lot you can do, but it does rely on getting that first kill. That's the main thing. Sometimes Ruz opens it up though, but we need to see a little bit more of that as well. Meanwhile, for Zeta Division, I mean, you were talking about the pressure that Global Esports was trying to create, and Zeta just shows that they can definitely toy around with that as well. Now that Depp is on that op. Third round that he's holding on to this thing, and he's looking to make it work again. Now up on top of truck, doesn't see anything.
A bit of info from Heroron, but not quite the frag. Polvi punishes, and this could weaken up the B site. Okay, nonetheless, Laz comes Oh, off. Laz, Swings, bhai. gets a double, then backs off. Equal ho Laz gaya. sees the Nice Blaze, bhai. push through, Blaze King as well. Here comes the toxic screen with the positioning. Blaze King is up behind sight. Rotate कर दे. क्या headshot दिया है इसकी वैन से ये मरेगा Blaze मरा पीछे से डेप से मरेगा एक खाली है चलो ये मिल गया अपने को भाई डेप को निकाल दिया तो इजी हो जाएगा He's got so much util too. अरे वाह ओह What a punish. Here comes Blaze though. Takes out भाई ब्लेज क्या मारा भाई वो बेचारे के लिए बुरा लगा मेरे को यूरान के लिए उधर ये यूबी भी निकाल इसने लिया वो क्या अबे वो क्या चेपी बेस हाँ भाई क्विक्स को मारा भाई उसने This is just Mount Everest to Oh my climb god, here. look at lightning fast. उसको कोई आइडिया नहीं कहाँ पे Totally पता नहीं। Lightning fast has gone up behind. सेव करेगा सेव करेगा ऑफ सेव करेगा सेव करेगा This is where he backs off because yeah, it's already भाई मेरा माइक ऑफ है भाई इश but you ऑफ still सेव have कर the रहा lead. है नाइस Yeah, I मैं don't exit mind पे going पे down निकाले for a lead वो you तो could lead earlier. I Easy round. absolutely think Zep tries for this, which is insane. पैसा है अपने But पास। वहाँ पर पोलवी ने अपना कौन था प्लीज उसको पीक नहीं लेना चाहिए था उसको पता था अपना राउंड है वाइपर को तो पैसे की जरूरत है पोजीशन नहीं पता ना होती है Even with new colors as well. मारना तो पड़ता But ही पड़ता है G, उसको good timeout, right? I love that they're kind of waiting. Is there a push out? Because here's the thing, that's what we mentioned with that single initiator on the other side, and now without the भाई ये क्या हुआ था it's going to have to be. वो भी हंस रहा है भाई वो भी हंस रहा है भाई ये मेरे साथ इतना होता है ना PUBG PC में मामा के साथ Too hard here in the first half. भाई नाइफ क्या है भाई ये कहाँ स्कैन किया ओके हुक्का स्कैन किया Pushes from Zeta from before, so he's trying to be careful. Thrash confirms information. Huron has held hookah before, so they're just trying to be careful. They suss out some positions as well. This is them just trying to see. भाई इतना आगे आ चुके हैं भाई PhonePe में यूज आता है हाँ भाई बहुत काम आते हैं वही देखता हूँ ब्लेड Ben and Laz. Okay, but oh my goodness, here comes Heroron. भाई Despite what we're talking about, despite the numbers coming in from global esports, somehow with perfect timing on the utility, Heroron guns them down. Now Yeah, Laz round takes to out gaya. Benkai, and with that, you've lost all your arms and legs. You know, when I first saw the composition, अगर इसने random fire कर दिया दीवार पे वॉलबैंक से मरेगा I लेग kind में of liked GE's idea, but the execution of it is starting to make me feel that maybe they Blaze spike उठा के TP too मारेगा much of the pie, right? You wanted your lurk, but you still wanted the double initiator for these set plays to go in, for these distractions to set up Polvi to go in and entry and get that early frag. But that means you're sacrificing that second वीडियो controller. भाई बंदे So की the only way पोजीशन to ही पता creep चल गई up to the entry point, to that starting line for an execute, is to check at some point. One of these corners has to be checked with contact, and at that point, if you're not winning every single duel, it's going to be rough. It is. I mean, this is हाँ just एल्बो off नहीं the चेक करा refresh cooldown, so might as well use it, see if you get anything. Doesn't quite find much though. So बैठ now just गया। trying to hold on to हाँ the बैठेगा frag, but obviously Laz Just has to stay alive. On the last second, Laz is going to start shooting. Surely. Wow. ओ ओ भाई भाई He's got some strong arms. 200 IQ bro All the way through. Let's go Bream Bancho भाई Oh my god. मौली तक ही फेंक के बोल दिया चल आजा चल अरे मौली नहीं स्टिम डाला भाई ओ भाई सैचल फेंका बेवकूफों अरे ब्रिम ने स्टिम फेंका था अपना Bream से सब क्या ब्रिम का स्टिम था वो स्टिम बीकन Bream ने ड्रीम और सैचल दोनों आए हैं ड्रीम अरे एक आया मेरी जान सैचल की आवाज आई है मेरे को भी वही लगा गाइस 5 लोग देख रहे हैं भाई लाइक कर दो स्ट्रीम को चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने किया नहीं अभी तक Was Russ. He was really riling up the entire team to keep the momentum up, and they've proven at Convergence that they will never. 7-5 या 6-6 हो सकता है That's why we're keeping the score close. However, with tiny little gaps, Zeta still continues to decimate. Sugar Zero now picking off a frag. इजी 2-3 आराम से निकाल At this सकते हैं point, damage is done. Spike will go down, but look at this. अरे एक पिक और चाहिए अल्टा आ जाएगा Huron trying to wrap back around. Benkai with the new दोनों की now location coming से in, so Zeta has to take things a little bit अरे slow. बैंकाई ने अल्ट मारा है दोनों नेट They have to push out one way or another. Just waiting for it. They're always going to be out dueled. Huron
एक पिक चाहिए पॉली ये मैं ना भाई, एक अगर एक पिक निकल गए अल्ट निकल जाएगा, नेवर माइंड। 7-5 डेप तो भाई बहुत गंदी ऑप चला रहा है भाई। सही बोल रहा है कि नहीं आने नहीं देना है। कोई ना 7-5 G's idea is you see the very beginning of it, and then it just barely 7-5 होके तो डिफेंस अच्छे से निकल सकता है finish the entire execute, right? Someone like Laz stays alive, Uran stays alive. भाई। वो ब्लेज किंग तो फालतू में मरा भाई, रस के स्प्रे में मरा भाई ब्लेज किंग बेचारा। ये है ना कि इनिशिएटर अगर दोनों खेल गए तो राउंड सिंगल इनिशिएटर है, सिंगल इनिशिएटर है जीटा पे। डबल इनिशिएटर जी पे भाई। गेको और वो क्यों दोनों इनिशिएटर है, कौन से? तो वही बोला मैंने और क्या बोला? When they peek out sometimes, it's those tiny gaps. They leave themselves. Just a blind showstopper commit doesn't make it. YouTube पे मैं स्विच करके यहाँ से हटा और यहाँ पे ये रोका। Yeah, they know it's coming, but it's a matter of can they get the kills, because if they have to wait, if they even just buy time here for Zeta, the site's gonna get taken over. At the very least, they are very aware of what Zeta are trying to do. Love the fake out. Buys him a little bit more space. डेप मारा, नाइस राउंड निकल गया। डेप को मारा, राउंड निकल गया ब्रो। हाँ डेप को निकाला तो राउंड निकल गया। 4v2 है, इजी यार जीत सकते हैं। टाइम ही नहीं है, डेप का टाइम ही नहीं है। Sugar Zero tries to push forward. The fragment is out. Russ puts a roadblock right in front of them. And with the triple kill, Global Esports ends this first half 7-5. 7-5 वो सब एक साइड एक चीज होती है। भाई का लाइनअप चुरा लिया गया भाई। मेरा केओ का रिवील का लाइनअप चुरा लिया। हाँ यार भाई 4 लोग देख रहे हैं जिसने तक लाइक नहीं किया भाई। अपनी प्रेडिक्शन डालो, हु विल विन द ओवरऑल गेम 1 बिटवीन जीई वर्सेस जीटा डिवीजन। गेम 1 का मैच 1 यहाँ पर अभी के लिए चल रहा है। दैट इज सॉरी मैच 1 का गेम 1 यहाँ पे चल रहा है। गेम 1 का मैच 1 जीटा डिवीजन वर्सेस ग्लोबल स्पोर्ट मैच 1 बाइंड का मैप है यहाँ पर। 7-5 स्कोर है फर्स्ट हाफ पे जीटा डिवीजन के तरफ। Swapping over onto attack for Zeta Division. I mean, what do you think of their composition? They don't really have the double initiator. Yeah, they might. युगा भाई को बुला के डीके में सीधा केस ठोको। ब्रोकर उधर से कॉल करके अर्जुन को बोलेगा शूट किया जो उसके ऊपर देखो मैं केस मारने जा रहा। That's all you got. You have to wait for the चलो भाई लेट्स गो। I mean, if you want to be safe, you're gonna have to invest in maybe one of the sky smokes or something like that, or you're really gonna have to utilize your toxic screen. I think दोनों ने इक्वल लिया लगभग। do they pressure that toxic screen enough so that G पूरा is इक्वल ले respected लिया। every time? नहीं 400 रुपए ज्यादा है जीटा के। Glasgow lurk and kill. अरे अब बोल that too. अरे ज्यादा ही होगा। 500 रुपए ज्यादा है। एबिलिटीज ले रहे हैं ना वो। हाफ शील्ड भी ले ली एक ने यूरन ने। फुल यूटिल लिया भाई यूरन। वाइपर ने स्मोक ऑफ करके वो आगे आने वाला है। वाइपर ने एक मॉली नहीं ली, एक मॉली नहीं ली। ये क्या कर रहा है? ये क्या हो गया? नहीं हो गया स्टार्ट हो गया। नाइस भाई पॉल भी नाइस बेबर नाइस। अबे डिफेंस पे हम भाई वही तो डिफेंस पे वो अपना एरिया सिक्योर कर रहे हैं भाई ताकि वो पुश ही ना कर पाए। अच्छा था ये भाई। ये चीज हम करने आए तो सबसे पहले मरेंगे भाई। ले जाएगा वाइपर ले जाएगा ये। तो अपना बंदा है। लाइटनिंग फास्ट है, उसको सेफ रखना चाहिए। हां पीछे उसको रहना चाहिए, एक्चुअली सेफ रहना चाहिए। इजी लैंप होल्ड करके रखना भाई। ये लोग ये देख ले टीपी से रोटेट नहीं करते भाई। भाई वो टीम है हमारे तो थोड़ी ना कि सारा बंदे दिखे तो रोटेट
रैंडमली टीपी में रेड नाइस पे 15 एचपी पे ले Easy 4v1 easy. It's not like they had all the post-plant lineups ready to go. It was already a 3v5. The Viper no longer कितने नेगेटिव कास्टर हैं भाई ये? अरे नहीं वो कह रहे कि ये वो पॉसिबिलिटीज बताते भाई कि ऐसे नहीं है कि अगर वो प्लांट हो भी जाता है अभी तो उनके पास कोई लाइनअप्स वगैरह है उनको खेलने पड़ता है बिकॉज 3v5 थी 5 नहीं बट वो साउंड नेगेटिव ही करता है फंसेगा फंस गया गलत नहीं बोल रहा हूं भाई साइफर को अपना ही वो नहीं दिखा अरे अपना नहीं है उसका तो साइफर लोग लगाते तो वही होंगे हां 1v1 तो जाके नो 1v1 देते ना नहीं लिया ना हाँ ये अर्चित सबसे ज्यादा अर्चित बोल रहा है तुम क्या बोल रहा है भूल गया मैं डायलॉग मैं चूतिया रुक जाओ भूल गया क्या बोल रहा था भूल गया हो गया भाई हो गया रहने दे यार हेडफोन यार ठीक नहीं हो रहे बोलने वाली मेरा वो ही कर दिया आराम को मेरी एक्सेप्ट कर ले फपल हो गया हमारा भाई फपल हो गया फपल नहीं होता फंबल तो और नहीं भाई इसका फपल हुआ है भाई इसका फपल हो गया है भाई 4 मैन पुश भी 5 मैन पुश भी वो जस्ट एक और उठाने के लिए लॉन्ग पे आए थे किसकी बात कर रहा है अरे जेटा वो लोग की सिर्फ एक और उठाने के लिए लॉन्ग पे आए अबे वो बेवकूफ पॉल भी था जो लेके चला गया है पॉल भी गया वो लेके भाई ये थूक तो है थूक के बाद सोल्ट भी है भाई थूक ने रोक दिया भाई सेंधा नमक भी है इन पे नो नाइस वन Good timing on the snake bite again. लौंडे भाई And it's just good information as Plant well. हो रहा है वाह डाल दी अरे गया And at this point, although the spike सही गया down, it's वाइपर मारा नहीं उसके थूक से भाई 1 HP है भाई 1 HP ओए और ब्लेज किंग रश भाई रश क्या मारा भाई सही बात है भाई रश फेल दिस भाई वरना ले जाते ना इसको दोनों भाई वो हाँ वही तो दोनों साथ में डबल पिक लेके बैठे हुए थे भाई दोनों को ही पेल दी थी एक बार में दोनों इंडियन है के नहीं एक सिर्फ लाइटनिंग फास्ट इंडियन है बाकी सब बाहर के इंडियन है साले रस इंडियन थोड़े ना है शक्ल से देख लेने में इंडियन है यार भाई इंडियन ओरिजिन है वो यार पैदा बाहर हुआ है इंडियन ओरिजिन है पैदा बाहर हुआ है वाह भाई पैदा बाहर होने के बाद भी इंडियन वाली शक्ल है उसकी नहीं कोई भी पैदा बाहर अगर इंडिया के रहेगा और इंडियन वाला शक्ल उस पर रहेगा भाई हाँ वो तो रहेगा ब्रो ऑब्वियसली नहीं जाएगा इंडिया में वो इंडियन गिना नहीं जाएगा ब्रो नहीं गिना जाएगा सिर्फ एक लाइटनिंग फास्ट एक प्योर इंडियन है भाई जो पैदा हुआ और यहाँ पर खेल रहा है पहले बाप इंडिया पैदा हुआ है इंडिया से जाके वहाँ रहने लगा तो वहाँ बच्चे हो गए तो वहाँ का हो गया हो हाँ बच्चा वहाँ का हुआ भाई तुम इस हिसाब से नहीं तुम इस हिसाब से क्या बोलते हैं क्या नाम है सौरभ है कौन है इंग्लैंड का कौन है ये प्रेसिडेंट है क्या उनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो तो इंडियन है फिर तो इंडियन ओरिजिन का है वो सिर्फ वो पैदा इंडिया में हुआ है लेकिन फिर वहाँ चला गया लेकिन ये बंदा पैदा बाहर हुआ है अच्छा ये राउंड के With that, the spike will go down. However, Benkai tries to pick up the rifle. Benkai को पड़ी भाई. Damage, but not too bad. Still tough though. Russ trying to wrap back around from A short. Only has a sheriff. The spike is down and Zeta is holding fast. Yeah, this is all they need. Rush के पास गन नहीं है क्या? ना sheriff. That's all GE wants from. वही ना save round था. Just more damage done. They've already caught up with the pistol round win. Okay. That fragment's got to be used at some point. तीनों हो गए. तीनों scan हो गए. अरे नाइस रस निकाल दिस भाई अरे इकोनॉमी खराब करो भाई उनकी हाँ इकोनॉमी खराब करो भाई हाफ बाय लेके आएंगे वो लोग फिर भी स्पेक्टर वगैरह नहीं राउंड जीते तो 3000 तो मिलेगा लाइटनिंग फास्ट बहुत रिस्क लेके खेल रहा है वो हर बार बहुत कम एचपी पे रहता है अरे नहीं वो गन उठा रहा था ना इस बार वहाँ हुक्का पे तो मरा वहाँ पे
स्पेक्टर थी उसके पास मिड रेंज गन नहीं थी बिल्कुल भी, तो वहां पर उसको पड़ गई थी। जो लोग होल्ड करते हैं वो हमेशा मोस्टली रिस्क पे ही रहता है। हाँ भाई रस अच्छा मारा भाई यूरान, वही लोग लेते हैं यूरान को अच्छा मारा। Very well defended, so speed up from depth, but you know the whole kind of like funnel them into the other side. भाई बेंकाई को भाई केज खोलने, भाई केज क्यों नहीं खोला बेंकाई? I love lightning fast's utility, but this look from depth, I mean just rushing in again. I mean it's the depth of old, it's the child of God, and with easy lamp hold landing. Nice. Nice. Lightning fast now trying to hold up around lamps. Manages to take down Uran, goes back in for another swing, but then shut down by Sugar Zero. Yeah, this might have to be a save situation. Nice, He's not in place to get the kill because now it doesn't matter if they know of their positions. Try to bait out contact. Indonesian rifler, he comes in, but then Let's go Rush baby. बढ़िया क्रॉस था वैंसोड वो। अरे भाई भाई थ्री साइड क्रॉस है भाई, 4 साइड क्रॉस थी, चारों तरफ से पीक लेकर रेडी थे भाई वो लोग। आए तो सही कहीं से। On that A short side, and then of course Laz, once he knows, he heard the TP, he's waiting for them, they hear that they've come into showers into the site, so he wraps around on a timing. He would have been able to clean out all 3 anyway, without them having a chance to turn back around. That's like such a good point, Will, because I feel like Zeta's new system as it is, they know to take certain positions, especially in these post plants. भाई ना उसने कैमरा खोला वहाँ पर, ना उसने केज खोला वहाँ पर, बेंकाई का रंग करा। रुक जाओ, जगह है नहीं, मैं बोल दूंगा। टीम का नाम लगाते लगाते मैं जगह सारा कैप्चर हो गया, 100 हो गया खत्म बात। ओ यूरान भाई, ओ एस हाँ एस नहीं आ रहा, एस ट्राई होगा लेकिन आएगा नहीं। क्लासिक I was impressed more with Huron. ये तो क्लासिक सेव है, सेव राउंड है। Huron was still going to have to take some time to get warmed up here at VCT Pacific, and obviously, you know, kills like that, it was a lineup, sure, both of them kind of peeking out at the same time. He was holding the right angle, but at the end of the day, he's putting the numbers that he needs to and more for Zeta Division. कोई ना those numbers, picks up the Viper's Pit. You know, it's a very useful piece of utility for the next round. But apart from that, just Global Esports' game plan. यहाँ पर खराब मरे यार। अरे पिस्टल थी यार, कुछ नहीं। शेरिफ वगैरह थे। भाई हेडशॉट पड़ा था भाई क्लासिक का इसको। क्लासिक का हेडशॉट पड़ा था। To that operator, gonna be a huge round because we know how important that is on Vine. And it's Polvi on the operator too. He peeks out Belong, doesn't see anything. Seekers out onto A. It's the full execute. Can Benkai stay alive? Oh भाई क्या ट्रिप लगाई है भाई। ऊपर ही पकड़ ले भाई उसे तो। भाई रश बेंकाई भाई, नाइस भाई। A little bit more pressure on towards lamps. It forces Sugar Zero back. They can't get the spike down. They have to think about the teleporter. बस थोड़ा वेट कर ले यार। हाँ वही तो। Benkai गया। नाइस रोज। अरे आगे दिया भाई। इजी 1v2, इजी 1v2, 50 HP इजी। ऑफ है यार, पोल भी पे ऑफ है। Doesn't see anyone and calls a rotate over. 50 HP and he's आ गया। Polvi's already here. Paint shells is all he needs to. Oh, he goes for the tap up top of the tube. Nades out. He knows Polvi is right around the corner. What? अल्ट मार के राउंड से सिक्योर कर सकता है अगर मार दे। Continues to tap though and jumps up again, trying to play with timing off of this. नहीं Polvi, अरे लेट्स गो। कवर आ गया भाई, गया था वरना। टोलू भाई जॉर्ड भाई। अरे वो बेट बन के आ गया है ना क्लासिक के साथ में, ऑफ थी उस पे। नाइस राउंड भाई, लेट्स गो। अब तुम आज भी बोलोगे कि क्या चबा रहे च्युइंगम में ऐसे मुंह बंद करके थोड़ा चबाते हैं। वो तो कल गुटके खा रहा था भाई, ये च्युइंगम खा रहा था भाई वो। ये तो कल वो खा रहा था भाई, गुटका खा रहा था कल, ये च्युइंगम में चबाता हो। भाई क्या सारे काले काले से बैठे हैं पार्टी में। Hey, what do you mean? हाँ एक मिनट भाई। सुनो तू गोरा है? यस ब्रो। तू गोरा है? हाँ? देख लो भाई, स्ट्रीम पे पता चल जाएगा मेरी। तो फिर जब जो तू है और जो है उसको
ऐसे आइडेंटिफाई मत करना कि वो मैं मजाक कर रहा हूँ यार। तुमको नहीं तुम लोग को समझ शायद नहीं आता कि तुम्हारा मजाक ना बाकी लोग को मजाक नहीं लगेगा अगर वो देखेंगे तो। And this is stream going on. First of all, तुम पब्लिक पे हो। मजाक तुम्हारा एक हद तक समझ आता है भाई, मजाक नहीं लगता ये चीज। क्या बोल दिया स्नूप ने? ब्लेड का नाम ले दिया नो। अबे अपने में मजाक करो समझ भी आता है बहन चो, तुम लोग पब्लिक में अपनी गांड क्यों मरवा रहे हो? चुप रहो। इस गांड में मेरे पे भी ऊपर जाएगा। अरे नहीं तो प्रो भाई का और नहीं रुक जाएगा भाई। मेरा जो रुक जाएगा साले। गुस्सा जरूर आता मुझे, बकचोदी भी मत करा करो। हाँ भाई मत करो भाई, काला पीला मत और करो नहीं यार। रुक जाता है। इनके लोड़े। स्नूप सिंह भाई तुम चाहते हो क्या प्रो भाई का और नहीं रुके? स्नूप सिंह चुपचाप देख ले। Good ults to get rid of that operator on the other side as well if they're able to just get up to it and then pit into the site, something like that for Zeta. भाई जी पे सब पे अल्टे भाई। Oh, what is this? Polvi is pushing out. अरे हट यार। नहीं बोल भी भाई। बोल भी यार हट। ऑप दे दी भाई, ऑप मत उठा दे। I mean the push out is hard to read at that tempo from Polvi with an operator. पिक्स पे खेल रहे हैं भाई वो। The mistake here is Zeta टाइम खेल रहे हैं was भाई actually prepared for more people to be pushing out. You saw that it wasn't just Euron waiting to check for that. It was multiple रिवील आ गया, people. अब घुसेंगे सारे। ऑब्वियसली घुसेंगे, उनको पता है एक जगह पे अल्ट आया है। बचा लिया अल्ट बचा। ओ नाइस ब्लेज बॉय। कोई ना लाइटनिंग आया इसे पे। बेनका निकाल जा। निकाल लेगा। बहुत एंगल्स क्लियर करने पड़ेंगे। On the minimap, Uran is coming all the way back around as well. I mean, Zeta just has to stay out. There's no way. There is no way Benkai is ready for this. ट्राई पीक तो दो ही मत। अरे वहाँ से पीछे कवर आ रहा है। यूरन से आ गया, यूरन मार देगा उसको। ले। ओह नाइस लाइटनिंग भाई। नहीं हो पाएगा। कोई ना पैसा है, आराम से निकाल सकते हैं अगले राउंड। 23 HP and he's probably gonna opt नहीं है पैसा नहीं है। अरे ऑफ जोन में जा रहा है शायद वो। ऑफ लॉन्ग पे थी ना, लॉन्ग पे ऑफ पड़ी। नहीं ले वेंचर आ गया उसके लिए। नहीं उठा रहा, वो सेव करने गया है। इसके पास 4000 है ना। हाँ बहुत पैसा है भाई। दो को बाय दे देगा। दो बंदों को बाय दे सकता है प्लीज। को चाहिए ना बाय प्लीज। वो अरे ब्लेज किंग और पोल्वी दोनों को बाय मिल जाएगा, बैंक का ही रस अपने बाय कर लेंगे। It wasn't a hard commit, and that's the thing. You had all ults, so obviously it's not a round where you would want to hard commit because you've got. और वाइपर अल्ट बहुत खराब था भाई उधर एम इन पे। यार उनका रेस तो बेंच वो पैसे चला रहा था, दिखने भी ना देता हो तो। अरे वो चलते हुए शॉट तो इनएक्यूरेट होगा ना। I mean, it's always going to be risky. Here's the thing: if you're ever peeking out, it's always going to be risky. But what I want to say is, ऊपर से ऑफ बिना स्कोप के बहुत इनएक्यूरेट होता है। हाँ बहुत ज्यादा हद ज्यादा। I don't mind. बंदे ने उस पे लगा दिया भाई, टीपी पे ही लगा दिया भाई। एलिपोर्ट होगा और वहीं बजाएंगे। भाई लेकिन फिर ये टीपी होगा कि नहीं? अटक जाएगा। देखते हैं। पकड़ लिया एक तो। It is true. Meanwhile, I mean, again, Zeta. दो बंदे आए नाइस में। They're doing a lot for this team. लास्ट भाई को निकालना पड़ेगा। पोल्वी को निकालना पड़ेगा लास्ट को। जज लेके बैठा भाई पोल्वी। Regroup with Laz, and then maybe just the execute off of the toxic screen is A. Either way, they know they put some pressure down. नाइस पोजीशन बट गया ये जाएगा प्लीज जाएगा भाई। नहीं मार देगा। A decent amount of time here with the get-go. But how ready are they going to be? Trailblazers are traded for that. Now a Dizzy and a Wingman still available for time. Russ is arriving. No command. रस ब्लेज भाई पीछे हो जाओ। अरे नाइस ब्लेज भाई। चलो ही गॉट हिज वन। भाई उन्होंने ए नहीं छोड़ा अभी तक, ये देखो। फिर पकड़ लिया। बस ये राउंड अपना है। 20 seconds left. I mean, Laz didn't actually have control of the site. They have to push through and
fight, and now with their smokes down, the mollies are भाई दिलवाने ना तेरे भाई ये राउंड तो अपना है It's not gonna happen, is it? Orbital strike though still committed. They want to push through. Sugar Zero getting fragged off of it. A second one in. Hiruron sticking the plant, and with that, 2 players left. Polvi, he's got the showstopper though. But here come the Seekers. Blaze King, we know where you are. Polvi, we know where you are. Are you going to commit? He's got the judge. They heard the classic too, so they know something's up. Oh boy, here it comes. Opens up lamps. अरे भाई राइट क्यों देखा पोलवी यार क्या कर गए यार 2 अल्ट में चले गए भाई पोलवी राइट में क्यों निकल गया राइट पे क्यों पीक लिया ड्रीम का अल्ट बहुत सेक्सी था भाई Guess what? I want to point to this round. These are the rounds that make a difference between a team looking too slow to lose and a team just looking like they know their exact timings, right? You wait for the rotate, and then you say that you're going to draw out all this utility, and then when it ends, you still have your ultimate, and you know that you can force it through, because that ult kind of acts like a wall that's on that spike plant. That is true. दोनों टाइम आउट ले लिया जी I think G लेना ही पड़ता was a हो little तो shaken up after that previous round. They probably weren't expecting this Zeta form. The coffee pee round. Honestly, I'm not as well. that felt really stress होता है भाई to me. I mean, towards the end of that, you can feel the pressure running out of time, but still knowing exactly what the game plan was, sticking to it and making it work. So I don't know what Global Esports can pull off with this time. They need 4 more rounds to tie things up, and I mean, just thinking about them playing on the defense. You know, कैमरामैन भी अपनी कैमरामैन को ले रहा initiator. Clearly, retakes were meant to be strong, but it's not quite happening just yet. Well, the timeout to try to save this map, take it to overtime. The null command still sitting there for a couple of rounds now, and surely something that they have. भाई नहीं है भाई ग्लोबल पे. But right now, it's gonna be a push out. It's been a couple of rounds since they've done this. It's an all-in from GE. We just okay. भाई फुल फाइट ले रहे भाई यहाँ पे. कोई ना नाइस पोल भी कोई ना ब्रो. अरे सेक्सी फुल ट्रेड पे ट्रेड खेल रहे. अरे फुल ट्रेड पे ट्रेड है ब्रो. फुल ट्रेड पे ट्रेड. बैक से ले जाएगा. बैंक का ही पे सल्ट भी है. अरे निकाल सकता दोनों को निकाल सकता है. Zeta is aware of this, right? They know they spent way too much time. नहीं. Nice. Knows that they were potentially looking for the rotate. He just has to hold. नहीं. He did hold, but then got swung upon by Sugar Zero. Look at how close Benkai is. I don't know if Sugar Hero would have hurt him. The timings though. भाई फुल 1-to-1 ट्रेड निकला भाई. राउंड फुल 1-to-1 ट्रेड. Global Esports alive for one more round. रस ने गलती करी. उस पे नाइफ था. नाइफ फेंक देता. दोनों वहीं के वहीं रिवील हो जाता. कोई ना. Well 9 यार. बुरा स्कोर तो बिल्कुल भी नहीं है भाई. फाइट दे रही है भाई. फाइट दे रही है. अच्छी दे रही है. पिछली वाली टीम तो पिट रही थी बस. I mean, this round just came down ये फाइट ले रही है all मस्त these सेक्सी. micro timings. हाँ ये. I mean, it was an all-out brawl to start. You can feel the tension and the pressure. मैं कुछ नहीं बोलूँगा विवाद हो जाएगा. तूने गाली जुबानी तो करी थी. लास्ट राउंड में गाली जुबानी करी थी. Now back into the next round. अरे भाग ले. Zeta tries to pick up the pace. A little bit more control in the shower. Hold बोल भी भाई hold. Nice one. Let's go. Nice one बे. वाइपर पेट है ये. A lot of people said they're absolutely going to have the brains for VCT. बच गया वाइपर. बच गया. मोली पड़ी. It does flush lightning out of position. कोई ना easy hold baby. Easy. 4v2. Control. But I'm a little bit curious to see what Laz's game plan is. But looking at where those 3v3 है भाई. Easy. निकाल दो यार. अबे स्पाइक है. स्पाइक है अंदर. अरे नहीं पोल भी. कर देगा वो. अरे निकाल दिया. बी पे ला. 1-on-1. Cypher diff. अरे वो ट्रिप तोड़ रहा है. Is he going to wrap all the way around? Because that would be one way to play this round. पीछे से मारेगा. उसको पता है वो पीछे से आएगा. पीछे देख रहा है वो. Laz is ready for this. Oh, is he ready for this? Oh!
कैमरा देख लेते हैं तो और बच गया बच गया भाई। कैमरा खोल रहा बार बार। उसको प्लांट करना पड़ेगा। Pressure is on last. 10 seconds and the timer is कैमरा खोल देगा वो। 5, 4, नहीं करना पड़ेगा, स्टिक करना पड़ेगा। लेट्स गो बेंकाई, साइफर डिफ, साइफर डिफ। मैं तो मैसेज सेंड कर रहा भाई साइफर डिफ। भाई मैं भी डाल रहा भाई। पॉल भी 2 निकाल गया ना, वो सही हो गया, और वो फिर एक गैको निकाल गया। भाई बहुत लिख रहे हैं भाई, बहुत लोग लिख रहे हैं साइफर डिफ। भाई का आ गया। भाई मेरे साथ ही में एक और बंदे का भी किसी का आया था नीचे। जापानीज स्ट्रीम है 60k व्यूअर्स। भाई इंडिया वाले सुस्ता रखे। भाई इंडिया वाले भी भाई है, चलो 13,000 लोग हैं भाई। जेटा ने इतनी देर के बाद जाके एक टाइम आउट लिया। नहीं दूसरा टाइम आउट है उनका ही। दूसरा है जेटा का दूसरा है। हाँ। दूसरा है। मुझे लगा जी का 2 ले रखा, मुझे लगा जी नहीं दोनों के 2-2 होते हैं ब्रो पूरी गेम में। वो देखना जो उनके लोगों के नीचे 2 डॉट बने ना, वो जब टाइम आउट अवेलेबल होगा तब वो वाइट होंगे, अभी नहीं है तो वो सारी चीजें क्लेम करते हैं, वो ब्लैक होते रहते हैं, ब्लैंक होते रहते हैं। अमिताभ बच्चन आएगा बोलेगा अभी आप नाइस डिफ ब्रो। चलो भाई बाय आ गया भाई, एटलीस्ट अपने पे भाई, सामने नहीं है बाय। इनका टॉप ले रहा ना भाई। भाई इतना खेला है ना, इस पे है वो चीज। जेटा के पास इतना बाय नहीं है, हाफ बाय है। भाई में सबसे डर लगता है भाई कैंपिंग होती है सेक्टर। बुलडॉग ले लिए फिर भाई बैंक का वो लिया था, जज लिया था, फिर वेंडर पे शिफ्ट। ओ भाई फुल 5 मैन हुक्का। बोल भी बहुत आगे निकल के बैठा हुआ, उसको पता क्या आ गया हुआ, चला गया। नहीं नाइस गलत करते हैं। हो गया जीजी, हो गया। हार गए क्या? 2v5 है भाई, बहुत गंदा पुश करते भाई, 5 मैन पुश कर रहे गए। अरे कोई ना यार, बैंक का एस, बैंक का एस। बट दूसरे मैच तक जाना भी चाहिए ना, क्वेश्चन वो है अभी। कुछ भी हो सकता है यार। हाँ कुछ अरे इस तो नहीं होगा। एंड सबसे पता है ये वाइपर एल्ट सबसे वन ऑफ द सेक्सीएस्ट एल्ट है पूरी साइड। हो गया एंटी गाइस, जी भाई बहुत अच्छा था यार, इतना स्कोर आ गया, बहुत बढ़िया खेले यार भाई। मतलब वन साइडेड डोमिनेशन नहीं है भाई, इक्वल डोमिनेशन थी। वो पोल भी फालतू में गया इतना 2 बार। इजी पिक्स थे पता है, अगर वो थोड़ा वहीं पे रहता होल्ड करता। अरे यार वो जो बी उन्होंने लॉन्ग पुश किया वो बहुत खराब था। पे भी तो वैसा लगता है ना, वहाँ सिचुएशन क्या है। बी लॉन्ग पुश बहुत गंदा था। अरे पर अगर इन्फो नहीं है तो इतना पुश कर दिए तो भाई वो लोग फुल बी हुक्का, उनको साइड पूरी खाली मिल गई ब्रो, लिटरली बी साइड पूरी खाली मिल गई। पर बढ़िया मैच था, मजा आया। अच्छा था यार, गलतियां वो देख लेंगे, अब दूसरा मैच में मजा आएगा। अगला मैप है अब एसेंट का। हां एसेंट बैन होता है, एसेंट तो बैन हो एसेंट गया। बैन हुआ था। स्प्लिट है, स्प्लिट भी बैन हुआ था। स्प्लिट बैन हुआ था। कौन सा मैप है फिर? लोटस भी बैन है। लोटस ब्रीज बैन था, लोटस और ब्रीज बैन था। सनसेट है, सनसेट डिसाइडर है, सनसेट डिसाइडर है, सनसेट डिसाइडर है। तो रहा कौन सा ये? अभी का ले लो। एसेंट है ब्रो अगला। आइस बॉक्स है। आइस बॉक्स, हाँ आइस बॉक्स है। आइस बॉक्स मामा एक बात बता, आइस बॉक्स एक्चुअली में कैसा मैप है और उसमें कौन सा ऐसा लग? एक्चुअली जी का अच्छा मैप है, जी का अच्छा मैप है।
keep Global in पहला this वाला one, भी जी का था ना भाई पहला वो चूज जी का था भाई था। अरे करीब ही आया हुआ है भाई, अच्छा मैप था यार। करीब स्ट्रीम देख रहा है, He was a fairly weak map in the past for Zeta division, but clearly कड़ी चावल स्ट्रीम देख रहा है। Carlisle Jr. they have been working with this team to improve this map that has been a bit of a bane for them in the past, but it still didn't have to be. मामा बैठा है, मामा नहीं है। You didn't give up the pistol round in the first half, and somehow, while defending, they still allow for a 7-5 half to come through. Global being able to get those 5 rounds was a godsend for them. And I thought भाई अरे एक कौन, ओ ये कौन है? doing here for Zeta. Global, they did have a nice round back. They get up to 10, but सालो I thought that was going to be their चाइनीज स्ट्रीम देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है तुम ये भी करोगे। All because of how quickly Global is just able to adapt. At the first couple of rounds during the first half, they were struggling in just trying to get control in terms of the rounds, but after a few more, they start to get their groove on, and it really translated into भाई सबके बराबर के भाई 15 15 15 14 13 here for Global Esports, and that's why we're seeing them be so close to Zeta in that 13-10 end. And we can see right here, MVPs, we got the gods facing off just as we were hoping for, and Def is just so amazing, isn't he, Achilles? Yeah, and I mean, this is a known quantity. For me, honestly, obviously the ACS not reflected fully, but Yoran was a huge factor in them being able to get those initial wins coming through. This guy was looking ever so clutch. Great moments there with the Sheriff as well from Yoran. So मेल ऑर्डर कर दो। अच्छा पैसे दिख रहे हैं मेरे पास, कर दो सर जी, अब कर दो यार, कितने लोग बैठे हुए बे? मेरे पास खुद के देने के पैसे नहीं है। 3 4 5 मील ऑर्डर कर दे भाई, 500 रुपए की हो गई, 100 वाली खा लेंगे कोई नहीं। अर्चित अर्चित देख For Carlisle, when you come over from a साला म्यूट Brazilian squad, one thing that you can certainly inject into your new team is going to be some aggression, some गाइस जो भी देख रहे हैं प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस स्ट्रीम। slowing things down. और लाइक हो चुके हैं, नहीं कर रहे हम, डरा रहे हो तुम हैं, धमकी दे रहे हो। Really taking their time धमकी to कौन दे push रहा it onto the site with like 8 seconds remaining. धमकी तो मैं तब देने में लायक कहीं हूँ भी नहीं अभी Willing to फिलहाल। up the aggression from time to time, and I love to see this because they were that team that just waited for 20 seconds, take the site, and then they went and tried to execute. And more often than not, especially in the LCQ, they were getting away with it, but that is not a style of play that is going to be sustainable. Yeah. Also, one thing I just wanted to add with how Zeta has been actually playing. मतलब ना बेस्ट राउंड ये जो साइफर डिप वाला राउंड निकला था वो, बट उसमें जो पिक्स शुगर ने निकाले थे वो भी बहुत लेग से था। बैक साइड वाला अल्ट देखे हो आज तक तुम? जो लास्ट राउंड में जो अल्ट हुआ था जिसने सिटी कवर कर रखा था, हाँ देखा है ना नॉर्मली। ब्लेड क्या खाएगा मील में? वो मील नहीं मारा हमारे लिए। एसी अबे चुप साले, कुछ ना मंगा रहा मैं किसी मेरा वो खा लेना फिर। आजा आजा मैं तुम एसी खिलाऊं तुझे। साले मैकडॉनल्ड नहीं खिलाया जा रहा, इसका केएफसी पहुंच जा। पैसे है नहीं दोनों चीज के मेरे पास, मेरी चल नहीं है। मील ऑर्डर करो यार। मामा तो कल गया था उधर। अच्छा मामा आज से जाना है ना? मामा है कहाँ? मैं इग्नोर मार रहा। तो रेंजर आया हुआ है। सुरेंद्र I mean, I rightly do agree. We saw just some. It's hard to say whether or not there are fantastic reasons. ये कह रहा है मैं तो थक गया, मैं अभी आराम करेगा बैठ के। Way down after playing aggressively, and then PhonePe goes on. आराम तो कल करते यार, आराम तो कल करते। हाँ, कल तो 7 घंटे का आराम ही चल रहा था। आराम तो कल करते। 8 घंटे का भाई, 8 घंटे का। हाँ, कल 8 घंटे का पूरे टाइम तो आराम ही चल रहा था। As far as player placement on the side of Zeta is concerned, that's something that कल तो भाई दिमाग का हो गया था। so they need to make sure that they know that they're pushing into somewhere a little bit safer. चलो भाई स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो गया। Don't know that it's safer. They need to be a little bit faster on those reactions. Now the second map is going to be Icebox, and this is Zeta Division's pick, which is curious because it seems it's been a very long time.
अरे इनका ये कीबोर्ड देखना पे कितना छोटा है बहनचो। भाई 60% वाला कीबोर्ड है। कीज होती है। देखो ना कीज भी छोटी है, अपनी तो बड़ी वो बड़ी है। FPS वाले जो गेमर्स होते हैं ना, जिनको सबसे ज्यादा FPS मतलब कीबोर्ड वो छोटा कर ही लेते हैं। अरे वो ये जो राइट साइड वाला नम पैड होता है, एरो कीज ये सब कुछ नहीं चाहिए था ना। 68 है जिस पे एरो कीज बना हुआ 68 है। एरो कीज नहीं है। हां 10 किलेस होता है वो। ये देख रहा है, ये देखिए रहा इसका, ये बिल्कुल इसका ही नहीं। हाँ ये वाला तो मेरे पास भी रखा हुआ है, लेकिन ऐसा मेरे पास नहीं है। फिर कहते हैं हम अमीर नहीं है। तो ये आता भी तीन का ही आता है ये, ठीक है। देख रहा है 3000 का कीबोर्ड, यहाँ 150 रुपए का कीबोर्ड चला रहा हूँ। देख रहे हैं 150 का कीबोर्ड चल रहा है भाई। मेरा 500 रुपए का कॉम्बो है भाई, कीबोर्ड और माउस का। ले भाई का 100 रुपए का, अर्चित भाई का ले बैच। अर्चित झूठ बोल रहा है बे। गेमिंग कीबोर्ड के बारे में बता, गेमिंग कीबोर्ड का बता साले। नहीं ऑफिस कीबोर्ड क्या होता है? मैंने कभी वो किस चिड़िया का नाम है भाई? अरे राम यार ये गलत है ये टर्म। अर्चित अरे प्रो मील ऑर्डर करवा रहा, अपनी मील ऑर्डर करवा ले। नाम है जहर देके भेजेगा साला। उसको भी परौती लगी हुई है क्या? बैठा होगा बस। भाई वो मील अगर किसी के बोलने से अगर पनौती लग रही होती ना भाई तुम्हें, तो वो तो गेम खेलना छोड़ देते हैं ना भाई। बोलते हैं कि भाई तुम सब पनौतियां लगाओ सामने वाली टीम को, तो ऐसी हार जाएगी। मगर ये पनौती है भाई, ये साला ये पनौती है। मैं तो कल स्ट्रीम पे दोनों के मुंह के सामने बोला था ये बात। मैं कल 3:30 बजे उठ के गेम देखा, मुझे खराब करवा दी। अरे नहीं ये मेरे को लाउड पिछली बार भी जीती थी, तो उसी हिसाब से मैंने इस बार भी बोला कि लाउड जीतेगा। मगर सेंटिनल ने भाई धोया है भाई। धोया तो है, धोया तो इस बार जी ने भी है, बट जीतने वाला मैटर करता है ना। जीतने वाले का कैसे इस बार भी डबल स्मोकर इस बार भी। डबल स्मोकर है उनका, सेम चल रहा है। डबल स्मोकर यूज कर रहे हैं, ये डबल इनिशिएटर ले लो भाई। जेडिफ का तो पता नहीं, बट मुझे एक चीज थोड़ी अजीब लग रही है। चांसेस लग रहा है कि जेटा भी मैच जीतेगी। हाँ मेरे को भी ये लग रहा है, क्योंकि इसने पहला डिफेंस है ना उनका, डिफेंस भी है और ऊपर से उन्होंने डबल स्मोकर यूज कर रखा है इधर, फिर भी उन्होंने डबल इनिशिएटर रखा है। पिछले गेम में भी तो सेम ही था। बहुत तेज मामा थोड़ा तेज बोलते, 200 आवाज कर रखी है, मंदी आ रही फिर भी। मैं बोल रहा हूँ कि हार्बर ले रखा है उन्होंने। हार्बर का भी विनिंग रेट आइसबॉक्स का अच्छा खासा चल रहा है। हाँ पिछली टीम स्टार्ट हुआ है जो हार्बर की भाई कल रात को भी तो देखा ही है, हार्बर के साथ जीते भाई वो। उसको कहीं से भी मोड़ सकते हो। मैं तो मस्त बोटियां तोड़ रहा हूँ शैडो। अरे तू बोटियां मतलब बोटियां चिकन बोटियां तोड़ रहा साला KFC। पंजाबी में बोटी कुछ किसी और चीज को बोलते हैं। हाँ बोटी किसी और चीज साल हो गया भाई। मैं सोच रहा क्या हो रहा है। बोटी बीवी को बोलते हैं ना। वोटी ये बोटियां तोड़ रहा हूँ मैं तो। चुप हो जाओ भाई, चुप हो जाओ तुम बोटी दोनों। बोलते हैं ना, बोटी। I wanna eat your बोटी। देख इसे देख ना क्या है भाई ये बंदा, नंग तो है ही। बीवी को ये कमेंट्री करने से कैसा लगेगा? 350 रुपए तो मिले यार भाई। पिछले गेम में भी फर्स्ट राउंड ऐसे हुआ था भाई, जी ने इजी प्लांट कर दिया था। बंदा चेंज हुआ है, सोवा की जगह कौन है भाई? ये यहाँ पर चेंज हुआ है, हीरो रॉम नहीं था। Then it holds Zeta off for just another second. Last though up around the rafter side. बचा ये भाई बंदा, बचा अभी। ओ हेलो कहाँ भाई? भाई ये पिस्टल राउंड में यही कर रहे हैं भाई, फुल साइड दे देते हैं, प्लांट हो जाता है, फिर उसके बाद आराम से पेल देते हैं भाई। पिछले गेम में भी यही हुआ था। अबे पोल भी तो गोलियां पड़ रही हैं, देख नहीं रहा ऊपर भाई। अरे उधर से कॉम भी आया होगा भाई उसको, कि बंदा ऊपर चढ़ा है, ये ना भी आया होगा पता नहीं।
once ऐसा Polvi ना gets करो यार। the first kill. So he just wants to stay alive. Now it's ले ले मैच एक साथ जी हो रही है। जी का कल भी है मैच पता। साइड जब तुम्हारे हाथ में आ जाती है तो साइड को एकदम क्रॉस करके सिटी क्यों जाना होता है मेरे को समझ नहीं आता उसका कोई लॉजिक है तो मुझे बताओ यार। जी का कल भी है मैच पता। कल लूजिंग एक 17 को था, एक 17 को था, एक 19 को था। 17 वाला आज हो गया, अब 19 वाला तो रहेगा ना कल। भाई आउटलो भाई ये फोर्स बाय करते हैं भाई। 18 19 लूजिंग बैक हिट का चलने वाला है इन लोगों का। अरे शॉट भाई, बॉल भी भाई शॉट। नाइस मारा अभी। It's gonna be Polvi with a shot onto Laz instead. Clean head tap. And that weakens mid. ये ब्लेड भाई है क्या पुराना में के? हाँ अभी देखना अगर वैंडल वर्सेस शेरिफ क्लच निकला ना तो ब्लेड है। कल ब्लेड स्पॉट हुआ था, तुम सो गए थे, देखा नहीं तुमने? आइस बॉक्स में ब्लेड स्पॉट हुआ था। हाँ हुआ था याद है। हाँ Similar from before. भाई केओ का बस ये फायदा होता है एबिलिटीज कुछ टाइम के लिए वो हो जाती है। हाँ बंद होती है, साइड के अंदर एंट्री मिल जाती है। हाँ अभी आराम से बाहर खेलो भाई, साइड के अंदर बैठना ही नहीं है। पॉल वी लव यू ब्रो, पॉल वी भाई चुम्मा। नाइस। ओ एस एस नहीं, वो इसके लिए आया। जिंदा रहना ज्यादा इम्पोर्टेंट। अरे भाई वो ब्लाइंडेड था भाई। अबे पर गोलियां उसको रिलोड करनी पड़ती ना। पर बढ़िया था भाई, मजा आ गया। लेट्स गो पॉल वी। दो अबे चुरा लिया किल। भाई वो भाई जो तीसरा वाला था वो पड़ा था क्या? वॉल्विंग कुछ रिएक्शन ही नहीं है इनका बे, ये देर से रिएक्शन दे रहे थे। नहीं, इनका रिएक्शन दिखा होगा बट हमको दिखा नहीं रहे। व्यूअर दिखा रहे हैं कि ताकि वहाँ पे हाँ हम लोग दिखा रहे हैं कि जी मुंबई से भी देख रही है। मुंबई नहीं, ये दिल्ली वाली वॉच पार्टी है। अच्छा ये दिल्ली वाली है, कल होगी मुंबई वाली। अरे नाड़ भाई इतना नॉलेज है आप पे भाई, मत बोलो कुछ नर्ड को। हाँ भाई बकचोद इंसान चुप रहो। It's almost scarier than an operator when you just listen to it. Welcome to the Wild West, buddy. Eddie Young has say yo. Asteroid's gonna appreciate that one. Anyway, toxic. भाई ए पे 2 बंदे अभी तक है भाई। Global Esports is trying to play it safe. ओ ले भाई डेप मार दिया बैंकर को भाई। वही देख रहा था भाई मैं। पंका गया बैंकर लर्क कर रहा था पेल दिस। यार ये लोग कोई ना बोनस राउंड था। I need to see their POV on that one. Now it's gonna be lightning fast with nothing but a stinger, 4 barrels. ओह डैमेज दिया। हेड लगाओ उसे। हां हेड लगा। अरे नाइस, 2 निकाल सकता है भाई, एटलीस्ट 2 निकाल सकता है। स्टिंगर जॉर्ड बोलते हैं। नहीं देख लिया उसने, देख लिया। ऑब्वियसली देख लिया। 100 का। And this is one of those situations where, I mean, sure you had one outlaw, but you've got these stingers in hand. And when it comes to the B site, I mean, you're not the one with the arbor. Those sheriffs Team are है going इस to be bro। just as strong, if not stronger. The मतलब problem एटलीस्ट 2 और निकाल सकता है, पता है, इसलिए वो लोग पीक ही नहीं लिए भाई लास्ट में। यहाँ पर वो जानबूझ के मारा था, अभी ये जानबूझ के मारा। पैसे चाहिए उसको। मैं अभी कॉल करता हूँ, रुक जा रोशेंद्र को। क्लासिक अबे एम लैब्स करा इनसे सालों से। देख एक क्लासिक से मार रहे हैं भाई, क्लासिक से। वही फिर प्राइम का तो फर्क पड़ता है भाई। अरे भाई नॉर्मल से मारा भाई। प्राइम का पहले भाई। So eco off of ecos, we got the thrifty win. बस नर्ड में पीट जाता है कभी-कभी। हाँ बड़वे तू चुप रहे। साला वहाँ मैच चल रहा है, यहाँ तुम लोग मेरे को तोड़ रहे हो मिलके। अरे तुम हो ही बोटी बेंचो, तोड़ने का मजा ही कुछ और। Let's go lightning, let's go। भाई ये साइड खाली कर दिस।
picks up the triple, and all of a sudden Zeta Division are left wanting more. Spectrum Guardian, let's go. This type of भाई अंदर पैसा भाई है इसके बाद because given their compositions, यही given bot their मारते हैं। tendencies, a lot of people are going to start to assume. भाई बड़ा प्यारा मारा एक गन उठा के सेव भी कर सकते हैं ये लोग मेरे ख्याल से तीन की क्या सेक्सी है वे। भाई बहुत सेक्सी मारती है भाई लाइटनिंग Different tempos that really start to play a macro game of Valorant against your opponents. एक गन उठा के सेव कर सकते हैं You had कर a bit सकता of है pressure towards B from earlier on, and then you also always think Benkai might lurk Save around कर corner रहा है, sometimes. save कर You can't just always leave depth to deal with him. Meanwhile, on the other hand, off of the next round, Global Esports just Let's goes go. in for that mid play, and that's something that Zeta, hasn't really defended all too well. Remember the previous round where PhonePe picked up that quad kill. भाई बाहर भी नहीं निकले भाई वो ये देखो तो मेरे से बाहर भी नहीं निकले कि गलती से भी नहीं मरना भाई भाई वल्नरेबल हुआ था लाइटनिंग ये देखो तुम भाई लाइटनिंग वल्नरेबल हुआ था ये देखो भाई बोल दो तुम ही कुछ बोल दो हाँ ठीक है बड़वे Very nicely done. Now we've got PhonePe on the Blade Storm. And they're looking to open things up towards A. Zeta definitely wanting to back off of this. नाइस लाइटनिंग आइए और एक निकाल लेगा Oh no. नाइस बेंकाई Things just start to fall apart for Zeta Division. Not getting Plant the हो right गया। read, peeking into हाँ हो गया lurks, कोई ना इजी and at the same time not quite able to make this अबे retake gun ले happen लें। just yet. है Good उससे job sheriff for है that save, but while you're going for that, lightning fast is trying to hunt you down. Wow, okay, that's John Wick behavior. भाई लाइटनिंग पास बी पे खड़ा भाई वहां से पिक्स उठाएगा एक और सेव राउंड जीटा का नाइस बस इजी राउंड निकल गया अल्ट आ गया उसका अल्ट आ गया Allows for PhonePe, who is on the Blade Storm, to go अरे। for it. लाइटनिंग का अल्ट आ जाएगा अरे लाइटनिंग का अल्ट आ गया कोई ना Those guns away. Alright, now we've lost a plot. इजी एक ए साइड तो लॉकडाउन होने वाली है अगले राउंड में ये बी भी हो सकती है वन ऑफ द टू साइड्स इज नाइस लॉकडाउन राउंड गाइस अबे ये इंपीरियल क्यों उठाते हैं भाई? उनकी मर्जी अच्छी लगती है चलती है बे वाइट वाली अच्छी है भाई वाइट वाली अच्छी है ग्रीन वाली भी अच्छी है पड़ा तो था। इंपीरियल ओवरऑल अच्छी है यार तो इनको एकदम से उसने राइट पे लाइटिंग ने एकदम से राइट पे अपना गोलियां मारी ये होता है ट्रेड को काउंटर करने की कोशिश की अगर ट्रेड होने वाला होगा अगर जैसे मारा तो एकदम से अरे उनको कुछ आइडिया नहीं था पीछे बंदा है आइडिया नहीं ना हो सकता है ना ट्रेड इनको वो वाला आइडियाज मिलता है ये देख अपना सारे प्रॉफ बोल ये देख अभी टाइम आउट देखना नीचे वो दो डॉट्स लगे ना हाँ देखा अभी ज़ेटा ने टाइम आउट किया एक चला गया हाँ अच्छा खेल रही है इनका एक नई आईडी होता है जिन पे नाम इनका जरूर रहता है बट जो उस राइट आईडी में सारी स्किन्स मिली होती है उन लोग को अरे नहीं ऐसे नहीं होता ऐसे डेवलपर आईडी होती है डेवलपर ये ई स्पोर्ट्स आईडी होती है अलग हाँ ई स्पोर्ट्स आईडी होती है पे इनको जो स्किन लगानी है आराम से आई थिंक नहीं मेरे ख्याल से ये ई स्पोर्ट्स आईडी होती है और इस पे जो इनके पास ओरिजिनल आईडी पे स्किन्स है वो स्किन्स रहती है अरे मामा से पूछ लो ना मामा से पूछ लो मामा किस लिए बैठा है यहाँ तो बोले तो सही भाई बोले हमने मुंह थोड़ना पकड़ा भाई बंदे का अरे नर्ड भाई है भाई बोलने की जरूरत नहीं वही समझा देगा सब कुछ इजी मुझे रायट डेवलपर वाला आईडी है का आइडिया है इसलिए मैं बोल वो तो ऐसे बेटा टेस्टर्स को मिलता है ना वो वो अलग होता है इवन नया मैप या फिर नया जो स्किन हो तो उन सबको भी टेस्ट करने के लिए बुलाया जाता है ये छोड़ दिया नर्ड भाई तो सही सब ये वापस रीटेक पे खेल लेंगे भाई रीटेक इनका बहुत गंदा है भाई लाइटिंग फास्ट निकालना पड़ेगा लाइटनिंग का एटलीस्ट दो निकालने पड़ेंगे ऑलवी को भी निकालना पड़ेगा एक यार ओ भाई कोई ना फॉलवी का नो आइडिया फॉलवी का आइडिया नहीं है उनको डब्बे में बैठा वो चेक ना करे बस मार के हाँ वहीं से चेक ना करे वो नहीं कर रहा वो चेक उसने वहाँ पे मॉली डाल के उसको निकालने की ट्राई तो करी
वहाँ मारो तो पीछे भाई। बोला तो पोल भी निकाल दिस ब्रो। कोई ना अल्ट पे रश अल्ट पे। अबे अरे यार रश कोई ना निकाल सकते हैं। हार्ट अभी भी उसका बैठा हुआ है, आसान से तो उनका वो नहीं हो सकता, उनको डिफ्यूज करना ही पड़ेगा। जीत गए राउंड अपना है। फिर ये गाली जो बनी कर दिया पोल्ट्री वाला। अरे नहीं कोई नहीं, वो तो हाई लाइनअप से मरा नहीं। रश मर गया। यूरन मर गया ना। वो केओ का अल्ट भाई बहुत काम का है भाई। ये देखिए यहाँ छुप के ना बहुत अच्छा वो निकल गया। हाँ वही तो। अरे surely they will continue to release some comms throughout here, and it is great to listen. They've got such good energy across the board. Two names really stand out right now: Lightning Fast and PhonePe. The snake bite with the opening frags. भाई रश को क्रेडिट ड्यू है भाई। अरे बैंकाई नाइस। कोई ना ट्रेड पे हीरो नो। कोई ना इजी 1v3 का राउंड निकाल दिया पूरा। हां इजी 1v3 अरे हीरो तो मारा भाई। निकल सकता है। पैसे हैं। हाँ पैसे बहुत है। अगर एक आधा निकल जाए तो तीनों ए पे होल्ड कर रहा है। वही कोशिश कर रहा है वो। लॉन्ग टेक लेना चाहिए था बट ठीक है नाइस। कोई ना अल्ट आ गया उसका। भाई ये निकाल दिया भाई, इनका वाला सुबह निकाल दिया। अबे ये देखना ये चीज भाई एम ले बेंच ऊपर से लेके नीचे आईसो खेलने का फायदा है। भाई 4K निकाल दिस भाई। Just a couple rounds during the off season as well. Very sharp shooting when he's in the zone. That's what we need to see from Zeta as well. I mean, you got to fight fire with fire sometimes, and maybe the answer was just to really get a good lead where Global would push out and then to peek off against that. But here it comes now, off of those wins from before. भाई रोटेट कर रहा है भाई। कितना सेक्सी है यार। हाँ वो बहुत सेक्सी टरेट था। वो एक्चुअली इसी को देखने के लिए लगाया होगा। हाँ। Zeta heard the op too, though, right? That's why they're not giving him the time. They just say keep him trapped in mid. We've still got utility from Killjoy to get information to hold. Lightning के पास अल्ट है, आराम से ए पे एंटर ले। बी पे कर सकते हैं। The patience coming in handy, but problem being they haven't ever retaken under tube or into tube. So this is something that Zeta will have to keep in mind of the entire time. Just trying to stay hidden. They don't want to give out too much. Meanwhile, Global Esports. बी पे फेक कर रहा है। They've managed to get openings before. बस आवाज ना देख के वो ऊपर ही देखी जा रहा है, पता है? हाँ ऊपर डेप नीचे देख रहा है। भाई ये डेप फिर से ऑफ लेके आ गया भाई, बदतमीज आदमी। नाइस टाइम पे सही टाइम पे गया। Yeah, they have to go in. There's the alarm bot. Now you know what's going through. The Anaswarm does enough damage. And a snake bite. निकलो बी पे। If you go now, but they're All we did. Gotta come in. And it is time. नहीं अल्ट वेस्ट। Well, here comes Step with an operator of his own. हो गया फिर से। And guess what? The Reckoning committed to 13 seconds, and this has to ये be a गेम safe. खेल रहा है। ऑल भी भैया आप भी ऑफ चलाओ थोड़ी सी। Yeah, you gotta keep up that operator. Build towards that blade storm as well, because you're not looking too healthy. Save easy save। But a save. I mean, you got trapped in mid, and then at that point, this really comes down. वो टरेट के ऐसे वो राउंड निकला हुआ था। No information. So instead of trying to creep back out, we have all these. वो जो स्पॉन वाला टरेट था ना, वो वहाँ से फिर पोल्वी को पिक्स नहीं मिले ना बिल्कुल भी। उसकी ऑफ भी रिवील हो गई कि ऑफ है, तो बिल्कुल किसी ने मिड पे पीक ही नहीं ली। जी का टाइम आउट। They don't have enough time because if they're rotating, we still have members still anchoring down on B and Global. Good timeout. ब्रो मेरी बात सुन ब्रो, अपने एक ई-स्पोर्ट्स लाइनअप बना, तेरा कोच मैं बनता। अरे मैं बन जाएगा, मैं बोलेगा ओ दिन लो सारे भागो बस। स्ट्रेटजिस्ट या कोच बन जाऊंगा भाई मैं। उसने कितनी बेसिक गलती करी कि वो अल्ट करते करते ऊपर में आ गया। और वो पकड़ा गया भाई, बात ये है कि वहां पर पकड़ा गया वो।
पता क्या ऊपर में क्यों आ गया ना भाई? उसको एक्सपेक्टेड नहीं था ना कि ऊपर राफ्टर से पीक लेगा कोई। अरे पर एरिया तो ओपन है ना भाई, वहाँ पर किसी को इन्फो नहीं मिली वहाँ की कि है कि नहीं है, तुम्हें रिस्क क्यों लेना है? ऐसे मोमेंट्स पे रिस्क नहीं लेना होता है ना। बाकी सब टीम्स अगर इन्फो नहीं है तो उसके लिए वो रिस्क लेते ही नहीं है कि भाई अल्ट वेस्ट हो गया। बात यह है कि अब अल्ट वेस्ट हो गया हमारा। अल्ट वेस्ट हो गया। हाँ, वाइपर का अल्ट अब आता भी 10 साल बाद। एटलीस्ट एक राउंड हमारा सिक्योर हो सकता था उससे। अरे वो राउंड निकल जाता, इजी निकल जाता। बस हार्बर का अल्ट था उसको काउंटर करने के लिए। होना चाहिए फैन। Recon doesn't find much, but it does bait out a bit of a cascade. Good cascade, actually. Very hard to, clear around that. Don't want to push past it. और डैमेज So that's why they're holding so far back. And in the वहाँ meantime, पे Zeta जान से मार pushes दे। out mid on their own. खत्म ही कर दे, आग हो जाए Doesn't find उधर। much though, but it is a good angle for Dep. भाई इंपीरियम ऑप सुंदर है यार। If they want any variation, they're going to have to take time to take over mid. Zeta, they're actually just banking on the fact that this is going one way or another. The Recon's not going to find anything. Surely this gives the call. And Benkai as well. Surely this gives the call over to focus onto yellow. Yeah, they're like, that's the lurker. We can rotate now. That's what they're doing. Snake Bites out from Euron. A bit of a jiggle, and that stresses out Polvy's position. They know exactly what's about to happen. The Cove trying to play Nice! Let's go Polvy! भाई केजे का अल्ट बहुत गंदा है, बहुत गंदा अल्ट है भाई केजे का। वाइपर का अल्ट मारेगा। बहुत सुंदर भाई, केजे का अल्ट बहुत गंदा था भाई, हद से गंदा अल्ट था। बना के दे दिया भाई, ये ले खा इसमें भेलपुरी। हाँ नहीं लेकिन है भाई, देखा जाए तो वो केजे का अल्ट बहुत घटिया था, इसी तरह अल्ट वेस्ट किया भाई उसने। वो सोवा का भी अल्ट गया ना, चलो अच्छी बात है। हाँ दोनों अल्ट गए। Let's go. You're making sure that Zeta भाई gets मजा आ रहा है जी को देखते भाई, इंडिया की टीम है भाई। to what Zeta is doing. So now Zeta a new look. It's going to be ये the stack फिर से ऑपरेटर लेके आ गया, अबे क्या दिक्कत है इसको? I also do feel like it's a bit इतना पैसा क्यों है भाई? थोड़ी अरे इसने पिछले राउंड में भाई लिया था ना। Let's go Polvy! नहीं भाई अबे नहीं ब्लेड भाई नहीं नहीं किसको सपोर्ट दे रहे ब्लेड? गद्दारी कर भी, ब्लेड भाई हेलो गद्दारी कर भी। कोई ना he got his one bro, he got his one। हाँ ऑपरेटर चले गए दोनों, अब प्योर 4v4 है भाई। भी अपने ये बोल रहा है कि यहाँ पे आ गए हैं, जल्दी आ जाओ, मेरी ले लेंगे। 3v2 है भाई, वॉल अच्छी है। Just trying to slow things down. Also with Huron and the angle around mid too. So भाई वाइपर ने क्या वॉल करी है? हाँ नाइस वॉल। ये वाल तो कॉमन है ये। नहीं गोलू भाई ना बिल्कुल AFK के भाई बैंक का ही कहाँ पर है भाई, बैंक का है भाई। भाई बैंक का नहीं पता इनको। अरे निकाल दी भाई, अरे बैंक का है, नाइफ निकाल के आ रहा भाई, नाइफ निकाल के आ रहा भाई। भाई 5-5 भाई, नेक टू नेक टक्कर दे रहे हैं ये लोग। फर्स्ट गेम भी ऐसा ही था, फर्स्ट गेम में फिर भी 7-5 था भाई। ये यहाँ पर फोर भी गलती है वो ऑफ देख गए उसको ना। अरे पूरा खुद ही रिवील हो गया था पूरा, वो नीचे देख रहा था। हाँ वो देख कहीं हो रहा था, बट ऑफ देख दिया और अलग पहले। I would say they're starting to fire up. Polvy leading the scoreboard in the server. भाई डेप फिर वो प्ले है भाई। हाँ वो ऑपरेटर उठाने के चक्कर में अगले राउंड में। Old Spice or New Spice? भाई डेप कैसे ऑफ ले आए राउंड पे?
पिछले राउंड में तो ऑफ गई। साला काला धन ला रहा है ये ब्लैक मनी स्विस बैंक से ला रहा है साला ऑपरेटर हर राउंड। अरे इसने वाइपर की ली होगी भाई, वाइपर की ऑफ। इस पे पैसे खत्म नहीं हो रहे भाई। ऑफ ली होगी। अच्छा वाइपर की ऑफ ली होगी भाई। मेरा वाइपर की ली होगी। ऑफ These walls are doing so much. क्या चल रहा भाइयों? You have so much time right now. 5-5 No one's pushed out from mid or A. Not कौन too तोड़ रहा far है? at the very least. Oh, if he gets नाइस शॉट। अरे कोई ना हाँ वरना एक तो वही दोस्त। the lurk there, or you कोई try नहीं to आ force जाएगा, away राउंड आ all the जाएगा। way around the pit, but now 40 सेकंड है। Dep very well focused. अरे ये बहन इसके हाथ में ऑफ गलत है यार, इसके हाथ में ऑफ गलत है बहुत। भाई बहुत नहीं मार रहा भाई। इस मोमेंट पे मुझे एसके रॉसी की ऑफ याद आ रही है, पता नहीं। स्पैम करिए स्पैम करिए। वो एक मारा था ना एसके रॉसी कम से कम ऑपरेटर से तो 4 तक बचा बचा। नहीं इतना नहीं मारा भाई। पिछले साल उसने अपना उसमें एलसीक्यू में भाई बहुत ऑफ की भाई उसने। मेरे को याद है भाई पर्ल का मैप था, मैं देख रहा था भाई, वॉच पार्टी जी वालों के साथ ही कर रहा था। पर्ल के मैप में तो मैं अरे यार भाई वो हगा भाई, बहुत ऑफ हगा था भाई वो रॉसी। Get a little bit paranoid, but now all you got to do is watch. नाइस वन। Lightning fast definitely Lightning does. एक और है। Goes in for that jitter गलत peek, but एंगल it doesn't गलत quite work. कोई ना इजी खेल भाई, इजी टाइम खेल। अरे वो ऑफ से ले जाएगा यार, वो कहाँ ही। Now they are aware that नहीं चोक कर दे it's up on top of the bell. ओह बच गया। Good peek. भाई, नीचे बैठ के डिफ कर दे रहा भाई। Second target, so अभी इकोनॉमी थोड़ी कम तो नहीं हुई पर नहीं लास्ट राउंड है भाई, लास्ट राउंड है भाई। through the screen he can't see वही him तो already, प्रेशर में आ रही। posted up. भाई वही डेप को पड़ रही है भाई, ऑफ नहीं चल रही उससे, भाग तो रहा बीच The beanie. रिएक्शन टाइम अच्छा था भाई वही उसका। ना मामा You gotta भाई watch out for that beanie. You gotta make sure it's pressed all the way down on your head. तो बॉस रूम जाके flushed all अरे मामा भाई तुम्हें ना रात को आना You get चाहिए था। fashion points in Valorant. हाँ एक्चुअली रात को बेलन कहीं घुस रहा था ना। कल मैं Or 4 something. बजे वापस आया हूँ Nah, not really. ठीक है 6 to 5. That's the main thing. मेरी माँ And की again, तो it's just गाड़ी how में they play बेलन back भी and डाल forth in दिया। terms of space. Global tries to pull some of the attention away onto the other parts of the map, trying to divide Zeta. ले जा एक ले जा। Zeta stays united and back into the A side. ओए Sudden change चल of एक pace निकाल दिया, for रश Global. निकाल दिया भाई, रश डेप को निकाल दिया Picks भाई। up his value. अरे रेवोगा This is Polvi not just creating space, he is नहीं उठाएगा। actually fragging out. अरे भाई कवर देना था पॉलवी पॉलवी ने गलत करा, पॉलवी ने भाई, दो अटक गए। पीछे देख रहा था पॉलवी। You get the detain. Okay, it allows for Bankai to go a little bit greedy. भाई पॉलवी कवर देना था ब्रो। Spike planted. इनका How do you थोड़ा सा ना retake मुझे लग रहा है कोई Zeta? कम्युनिकेशन डिफ हो रहा है। हाँ वही। लैंग्वेज बैरियर आ जाता बहुत कम गेम खेले ना ये साथ में तो इसलिए हो रहा है। है। कोई ना, ये सीरीज चलते चलते हो जाएगा, बहुत प्यारा खेल रहे यार, उसके हिसाब से भी बहुत सीरीज प्यारा चलते खेल चलते रहे। बहुत हो जाएगा। Setting up a bit of crossfire between 4-10 नहीं पर in the अगर ये boxes. लोअर ब्रैकेट में हार गए फिर क्या होगा? They know where it फिर lies. बाहर है ये, बाहर है। नहीं बाहर नहीं है, बाहर बहुत नहीं मैच है, है। चांस लोअर होता है। ब्रैकेट के बाद लेट्स गो। As well, just to watch his प्यारा friends बहुत back. प्यारा भाई। अभी लोअर ब्रैकेट छोड़ना ही है, अभी तो चल में 3 पॉइंट चाहिए। एलसीक्यू भी तो होगा, एक एलसीक्यू भी तो एलसीक्यू होता है, लेकिन अभी तो भाई नॉकआउट मैच चाहिए भाई डायरेक्ट। नहीं नॉकआउट नहीं है, अरे लोअर ब्रैकेट में 3 पॉइंट चाहिए, 3 मैच जीतने पड़ेंगे। कहाँ से जीत लोगे? अरे मैं जाऊंगा, अरे यही जीत लेंगे यार। मैं जाता अरे हूँ। लड़ जाएगा भाई ये वो अगर ये लोग इसमें एक दो से हारते हैं, जब जाके लोअर ब्रैकेट में अगर 2 पॉइंट जीतते हैं तो जब जाके होगा। Exactly on भाई अगर 2-1 से जीत गए फिर now on global हाँ बस फिर तो easy है। esports, showing us what he's capable of. A lot of Indonesian talents in VCT नहीं तो Pacific. नहीं इनका ऐसी नजरों में नहीं देख रहा, जब वो एग्जाम में कुछ समझ नहीं आ रहा था तो लेफ्ट राइट देखते हो कि कहीं से कुछ दिख जाए Knowing आंसर to कहीं का। push whenever the spike is tapped. ये टॉपर है, ये टॉपर है, ये टॉपर इसे है। टेंशन नहीं है। मैं अपना कर लूंगा, तुम देख लो। पूरा पेपर में And wanting to pick up his fallen teammate Russ. ऐसे दिखती है वो But भाई Raze तो आउट kicking की it back, I brought गेमिंग things back. कब से भाई चालू कर दी। पॉलवी का बेसिकली वहाँ पे टाइमिंग हो गई भाई, वो सोवा की टाइमिंग बहुत अच्छी थी पीक लेने की।
अबे नहीं, अरे एक बंदे कवर दो ना यार। हाँ वो कवर दे रहा था ना वो, लेकिन उन्होंने स्मोक मांगा होगा। क्या है, मर गया तो उठा दो ना भाई, इतना वेट नहीं करना ना। जब एक बंदा आगे वाला देख रहा है तो उठाओ ना बैठ के। चलो कोई नहीं। एटलीस्ट कवर तो फिर भी देना, उसने स्मोक का कवर देने का सोचा वो भी। हाँ आ रहा है। अच्छा लगा मैं न्यूज़ में हूँ। वो था ना वो रेव होने के बाद डायरेक्टली खड़ा होते ही ना मर जाए तो उसे स्मोक डालने की नहीं वही तो तब से देख रहा हूँ मैं। दबाया जा रहा है आवाज को, दबाया जा रहा है ब्लेड। ऑपरेशन हो रहा है। भाई तो घुस गया पोल में। ए साइड इन्होंने आके कर दिया भाई। If you go for all the flashes, they just hang back, and then you just got to deal with the post plant. So it's this rock Nice, scissor, but Blaze King still on fire from the first half. Definitely throwing a rock on that first one. Here comes Hiroran up towards and Zeta has found their opening. Has to gun down Blaze King, turns back around because of that. Easy 1v3 भाई, easy 1v3, एक गोली है 2 प्लेयर। Tries to wrap back around, checks in, doesn't expect यार थोड़ा सा ना बीच में वो हो रहा है। इमॉर्टल से ये सिल्वर पे आ जा रहा है ब्लेज को ये। ओह लाइटिंग We're फास्ट। seeing a couple good looks around it. I think teams around the वो नीचे क्लियर कर रहा था वो, हेवन के नीचे क्लियर कर रहा था। Obviously the pure threat that you सारे can watch एंगल्स का ध्यान देना हाँ, पहले ट्यूब क्लियर करनी चाहिए थी, ये बात अलग है। still hold under the window on different angles. There's a lot of ways you can use that to just कोई ना plant सेव कर रहे भाई, ये रिस्क नहीं ले रहे भाई लेने का। into the opponent into the future rounds. Especially for attacking teams too, I think. It's just another additional angle. Think about the defensive side, like whether or not you want to invest पकड़ गए watch that spot. On the other hand, though, right now, with the पिस्टल राउंड निकाल देना no चाहिए। force from Global. In fact, they're just kind of playing these unorthodox, really close range positions. They सारे लाइन में खड़े थे, मैं सोच भाई चारों भाई सही बात है भाई, आउटलो होती एक गोली में चारों खत्म थे भाई। वही सोच रहा था मैं, बैच जो टप टप ना हो जाए इनके। अब तो वो करती थी बाबा भाई। यार ये तुम लोगों का अटक गया क्या? नहीं चल रहा है भाई। ओए तेरा अटक गया होगा भाई, हमला लेते तू ही लेवे। देख ले, तेल लगा ले नवरत्न। बाय राउंड बाय राउंड बाय आ गया, चलो बाय फुल बाय। Sometimes it looks genius, and there's a बोनस राउंड खेल रहा है भाई, जीटा बोनस खेल रही है भाई। round you were supposed to win. So I think those are the times where I don't mind it. You know, you let it pass. Now you got your rifles in hand. बचाएंगे तो These are where बोनस में तो और क्या खेलेंगे। start to राउंड भी showcase. तो अरे नहीं, जिसके शेरिफ थी वो बिल्कुल बाय नहीं गया भाई। The Killjoy and Viper on the other side of the map to anchor. When you're right, you're निकल right. लिया ना उसने। And here comes नाइस बॉल instant pick off and backs off. साला गेम भाई, स्प्रे हग तो दिया था बट ठीक है। Advantage. Got control of mid as well. Might as well let them trickle in. Let's go, Blaze. Hearing the footsteps, gets the timing on the peak. Sugar Zero continuing to push up front, manages to catch the Russ, but how long can that really work out? बार-बार गेम खेलता है भाई ये। I can't see that. Managed to find shots with the Guardian of all things. Here come the rest of the players from Raptors though, and they are still peeking a little bit too fast, a little bit too much. भाई यूरान भाई यूरान 4 ले गया बैंच। That equals 4. A great 4 ले गया। अबे कम्युनिकेशन का थोड़ा प्रॉब्लम भाई, वाइपर के अगेंस्ट में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई भाई इन लोग को। नॉट बोलेगा मैं भी वाइपर हूँ, मैं भी सबको डिफ करूंगा। मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ। इफ तो वो कर गई भाई अर्चित भाई तुझे। ये तो कुछ ज्यादा ही अलग चला गया। अर्चित जब भी दिल्ली निकलता है भाई मैं बोल रहा हूँ। That's good movement from your end because you know that Chidi is trying to play around your double control. अरे चलो भाई, ये पर्सनल लेवल अटैक हुआ है भाई, ये पर्सनल लेवल अटैक हुआ है भाई। टाइम आउट भाई वो बाइक निकाल के निकल गया होगा दिल्ली के लिए भाई। वो अर्चित में खेलते रहते हैं। अबे मैं देख लूं बैच चोपर पोपर तो ना आ गया मेरे तोरे। कभी मेरे ऊपर मिसाइल फोड़ दे। वो निकल के देख लो, पता चला है भी यहाँ पे। निकल गया भाई, वो निकल गया अपनी उठा के। क्या है इस पे? भाई कॉन्टिनेंटल है भाई। हाँ कॉन्टिनेंटल टारगेट निकल गया भाई। करके आ रहा है। मुझे लगा ये चीज मेरे पे आके रुक जाएगी यार। तो
both sides, the coaching अबे staff सब टूटते racking हैं भाई, their सब brains. टूटते हैं. A map like Ice Box, I think it's very difficult. मैं ज्यादा टूटता हूँ ना, ये ब्लेड तब से तोड़ ही जा रहा था, मैं चुप होकर अभी जाके बैठा है बंदा. As long as that push and pull again, you pull on one side, another side gets a little bit more open, and sometimes that's an opening for both. फैमिली फ्रेंडली अनाउंसमेंट मत कर भाई. हेलो. We can say with absolute certainty it should मामा. be Zeta's pick. आ गया. So the timeout being called, invested into future rounds. भाई दिमाग खराब कर दिया तुम लोगों ने अर्चित भाई का. नहीं, ये बात नहीं है. तुम लड़कों के बीच में बैठे हो, लड़की बंदियों के बारे में बात करो तो दिमाग क्या खराब होता है, पर लड़कों को समझ थोड़े आएगा. बोलता रहो, ये बात मैं बोल चुका हूँ. सुन हमारे भाइयों में ये देख भाई, ठीक है, ठीक है भाई, सॉरी. जिंदगी में सेक्स नहीं मिल रहा इसका मतलब ये तो नहीं तो ज्ञान मामा कहाँ से आया ये भाई, ये मुठल है सारा एक किस्सा. लेकिन बात तो सही बोली यार, प्रॉफ को बात तो सही बोली. ये तो है. जुदाई नहीं मिली तो ज्ञान चोद देते भाई. एक खाली है भाई, एक खाली भाई, यूटिल भी नहीं पड़ी कोई ये पे. अरे मामा मेरा पब्लिकली हुआ था, मेरा तो पब्लिकली हुआ है. तेरा रेप हुआ है साले, उसको वही तो. हाँ वही तो, ये तो फिर भी चुद के आया था. अर्चित, इसको तो खुश होना चाहिए उस बात. I mean, I don't blame GE. This is just last minute recall from Zeta, right? You saw the Marshall, you saw them back up, you saw him shoot out the recon, which tells you that they want to hide information. They want to try to stay sight. भाई मैं रो चुका हूँ बहुत. ठीक है, हो गया मेरा. भाई लेते क्यों इतना टाइट है, मतलब यार. अरे लिया थोड़े ना था यार, वो तो दे के चली गई. तो उसका लैंड था भाई. आई थी यार, देख के करना था ना. लेडी बॉय को डेट करेगा तो ऐसा ही होगा ना भाई. डेप ने अपनी पोजीशन नहीं दी भाई. वो है थाईलैंड से पकड़ के लाया था क्या सेटिंग. गुजराती थी वैसे तो यार, क्या बोल. वैसे भी लोगों की तादाद कुछ ज्यादा ही बढ़ गई यार. अरे थाईलैंड भी बोला जाता है पता है तुम्हें. क्योंकि उसके सबसे ज्यादा थाई वहाँ थाई के बीच में जो चीजें होती थी वहाँ थाई यूज होती. हाँ वही वही. मामा भाई तो घूम गया है, मामा भाई तो बच के निकल गए. For the match point, save it for the grand win, and it just never happens. So why not just extend that lead? यहाँ पे Zeta का फाइनल मैच चल रहा है और हम बख्शोदी अभी. This again, I gotta say it. Brand new Zeta division. क्या चल रहा है? पिस्टल क्या ही सेव करेंगे? फ्री का राउंड दिया है इनको. So beautiful, so elegant. But it does again Just wow. extend that gap. 4-round differential. पैसे मिलते हैं ना ये मरने पे 900 रुपए. हाँ तो मर जाया करो भाई, सारे मर जाया करो. और एक राउंड अगर गया, ये राउंड अगर जी के पास हार गया, ये नहीं आया तो हार गया. मैं तुम्हें पहले कहा था हार्वर्ड काफी ओवरपावर्ड है बैंक का. ये बोला फ्री राउंड भाई, थोड़ा गेम खेलना सीखो. फ्री में कोई राउंड नहीं देता प्रो. ये बंदा जो खेलता ढंग से नहीं है, ये बंदा आगे ज्ञान चो. वो भी अमेरिका से है, तो अमेरिका से है. तू चुप रहे, तू चुप ही रहे. A bit of a guessing game this time. बर्चित तो चुप ही हो गया. बैंक से नहीं तुम्हारे का बात क्या दिखे. This is a great. वो बाइक की आवाज आ रही है यार, चित्त नहीं आगे बाहर. मामा कॉल करेगा तो आ जाएगा. So Polvy's really playing मामा for कॉल करेगा कोई maximum भी आ contact जाएगा. and maximum info. मामा फोन उठाता खुद का नहीं है. कोई नहीं ब्लेड की दिला देंगे अर्चित. दुखी मत हो. है Kind of guessing as to the previous rotations, the previous positions that Global Esports held. So without finding all too much, ये hold करके बैठे हैं kind of बहुत ज़्यादा. assuming and setting up for that execute into A. I don't know if it's the wisest decision. Yeah, the high tide doesn't cover all of rafters. They have to be aware of that. Okay, well the frag's still just as good. Yuran just walks up and takes down Russ. Lightning fast answers back though. उसने ध्यान नहीं देना. Look at the positioning from Depp. He's already making it up on top of screens. And with that, Sugar Zero conceals the plant, gets it through. A bit of a wall bang coming out. Doesn't quite connect, but Hiroran's still just as good on the Guardian. Similar to Yuran from before. Surely you save. उनका टीम लाइनअप बहुत अच्छा बना हुआ है. Feels bad, but you डबल need स्मोक this और off to make anything happen in the मजा future आया. rounds. Oh, he's going for it. Doesn't know the angle. Leg spotted. Okay, now we save. I mean, I think if you're Zeta, you chase. You got so many cracks. Trap him in. Well, we tried to pull a sneaky. I mean, this is a Zeta who is on the hunt here. They find the shot. Huron's already here. Oh, he heard him. No? Well, he was ready for it, but he just wants to run away. Just wants to buy time.
Nah, okay, he's managed to run away. The greatest escape. GG guys. Well, will it lead to anything? It's the one ray of hope. 6-11 has now. भाई डिफेंस पे जिन एक भी टीम राउंड से नहीं उम्मीद जीता है बैच तो वही टीम ही नहीं है नहीं एक चीज बोलूंगा आइस बॉक्स पे ना डबल लाइनअप कर वाला पहले कौन से वाले मैप पे यूज होता कल मेरे को याद है ब्लेड कल कौन सा मैप मतलब आइस बॉक्स पे कौन सी टीम कल खेली थी जिन्होंने डबल लाइनअप डबल स्मोकर यूज किया था इसका मैं बोला था कि तू स्पॉट हुआ है अरे कल वो खेली थी ना आरआरक्यू खेली थी अच्छा आरआरक्यू हाँ और जेनजी और आरआरक्यू हाँ जी डबल कंट्रोलर के साथ खेली थी आरआरक्यू हारी है भाई हाँ वही डबल कंट्रोलर के साथ जेनजी खेली थी हाँ वही डबल स्मोकर इस पे जितना एडवांटेज है वो मेरे को एक बात बोली कि But out in the open, gets caught out by Deb, who I will not mention with the play storm. Moving forward now, still, the retake's underway. You've got mid, you've got not Snowman any longer, just mid. Oh, timing. Benkai tries to open things up. The Viper's Pit committed to secure match point. Do you still go through or do you save? I mean, so much to consider. It's this or match point. No matter what, you're not going to have a great round the next one, but you're not finding the early picks. This is just not doable anymore. Colby's going to do the same thing, try to hold on to this operator. Zeta can definitely chase. He should be all right. हाँ लियो बोला था कल चैट पे कि इनिशिएटर अगर ढंग से निकाल इनिशिएटिंग आराम से हो जाता तो वो राउंड निकाल लेते बट आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे इनिशिएटर का भी चल रहा है इनिशिएटर वाला पॉइंट एकदम जीरो है व्हेन इट कम्स टू डबल स्मोकर क्योंकि वो फास्ट है फिर भी डबल स्मोकर लेने के बाद भी वो फास्ट ही स्लो नहीं खेल रहे एकदम भी डबल स्मोकर जब लेता है एंड सामने ही डबल इनिशिएटर होता है इनिशिएटर पे ज्यादा एडवांटेज रहता है क्योंकि वो इनिशिएटर स्मोकर्स को ये कर सकता है रोक सकता है बट यहाँ पे हो नहीं रहा वो है यहाँ पे नहीं हो रहा हाँ यहाँ पे नहीं ये पोल भी आगे जा जाके नहीं पीछा पा रहा अभी क्यों जाना है भाई हो गया नहीं हो गया डू एंड डाई वाला केस था ना कि होगा तो होगा नहीं होगा तो नहीं भाई डिफेंस में एक भी राउंड ना जीते यार This is Zeta on a whole new look, whole new level. Laz on the move. Lightning Fast heard him. Gets him on the flank as well. Good pickup. Mama Pacific का मैच भी आज दूसरा वाला यही है ना? Everyone's in position. Not to mention you around. यही चैनल पे होगा। इसी चैनल पे यार Pacific के इसी पे होंगे। Pacific के सारे गेम्स इसी पे होंगे। Managed to shoot them down. Rush trying to dance back and forth. The spike still being defused and held. Benkai able to hold it all the way through. Manages to make use of that space from Rush. वो होता ना प्रोज जोन फेक वाला सीन होता है उनका वही करके वही बोल के निकाला होगा हाँ वही बोल के निकाला है कोई ऑप्शन नहीं था भाई इसीलिए क्या है भाई बोल के नहीं निकाला मतलब हम लोग इंटरप्रेट वैसे कर रहे हैं I mean, you can't afford full buys. OT दिखा दो यार OT दिखा दो कर लो जी ये बंदा क्या बोलता आरआर क्यों जीतेगा ये शैडो No fragment on Russ. भाई मैंने सोचा आरआर की परफॉर्मेंस में चल रही है मैं कुछ नहीं जी पूरे उनको हराई है अच्छा खासा सेकंड गेम में बस अच्छा खेली है वो आरआर क्यों How long can you really extend this map? That is साइडर वाले मैप पे भी उड़ा दी थी right now. All Zeta needs is one. They are looking mighty decisive. 1 point away from the Blaze Storm. Goes in to take that space up around yellow. Timing peek off of the recon. Clears out the early half of the site. So Povey's aware that alert is still on the A site. It's either him or Lightning Fast that can hold that. Povey's going to leave it up to his teammate, regroup on B. Shock darts to clear out utility or just fend them off. Oh, Povey was ready for it. Laz wanted to make it happen though. If he did, then there may have been some rotations. But here comes Povey and Lightning Fast now.
I don't know if Depp suspects that this is going to be a double. Oh, Lightning just a jiggle. I don't mind it. Doesn't greed for the kill. But that means they're trapped in B. Exactly. Defense knows. They have to push up front. And as long as Russ, Benkai, and Blaze King can defend B well enough, they're going to run out of time. The pressure is on. And off of the cascading push up. Oh, bhai. All three players down. Depp now coming through. All that's left is lightning fast. And a Russ that is running out of battery, running out of juice. Finds the angle, finds the shot, but oh god, Blaze now propped up. That's a tough target to hit. भाई डेप अपना एक भी अल्ट नहीं ढंग से मारा भाई. Just a bit of a whiff here and there, and then you're on to डेप को मारने की जरूरत ही नहीं पड़ रही भाई. डेप निकाल रहा है. 13 to 7. उसको लिटरली मार रहे हैं. Zeta division clears this out. One of the teams that just did not make the ले ले अर्चित भाई का मुंह में ले ले. हेलो भाई. चलो guys. But they started जाता the तो भाई chapter कुछ with ज्यादा story हो गया about भाई. building up talent. तो guys आज की स्ट्रीम अभी वॉच पार्टी यहीं पर खत्म करते हैं. Not so likely like फोन कॉल कर लो ना. म्यूट पे दो. आपसे हम शाम को बताएंगे. थोड़ा मेरा आवाज तो आ रहा है अर्चित भाई के वहां से. For sure, but are they ready वो for अभी tier stream 1? कर And रहा है. Zeta says, why do you think we put them on our academy roster to begin with? Yeah, chat. Why do you think? And this map just says it all. You saw it a little bit on. The fallen powerhouse that is Sentinels might be making